Hello and good evening, and welcome to class number 12 of the Economy Foundation course. I hope you can all see and hear me. A very good evening to all of you. A very warm welcome. If you can see and hear me, please write yes in the chat, and we will start after that. Very good evening to all of you. All right. I have just checked. The notes, handwritten notes are uploaded, and they were uploaded yesterday only. So please don't spam the chat, Gaurav. अगर आप खोल के देखोगे, you will see that those notes have already been uploaded. Okay. Now, in today's class, we will continue reading the concept of national income accounting. I think we will cover most of the things that are left in this chapter. We will cover today, including things like what is factor cost, what is constant price, market price, basic price, etc., etc. So we will look at all of that today. After this, after we finish today's first understanding of national income accounting, then we will see the actual measurement or actual estimation of GDP. What does the Ministry of Statistics and Program Implementation do, and how does it actually estimate GDP? That also we will see today, right? After this, there will be some things left with regards to GDP. Things like what is the relevance of GDP? Is it the most relevant indicator for economic growth? What is the difference between what we are measuring in GDP versus what we are measuring in HTI, for example? And once we finish with all of these, then we will go on to the next chapter, which is unemployment. So this is what we're going to continue with. I think after today, maybe half a class more it will take us to finish national income accounting. We will see all the questions of national income accounting. And after that, we will continue with all of these things. Okay. All right. So सबसे पहले in today's class, just wanted to show you a little bit of Jadoo, and then we will start the class. So this is today's newspaper. This is today's newspaper. This is the Hindu of 28th November. Okay. If you have not attended previous classes, please watch them first, or you will not understand what is happening here. Okay. Now, let's understand this. Let's look at this. Let's look at this. Tax cuts may have saved rupees 3 lakh crore for India's corporates. Now, what do we understand from this headline? इस headline से हमें क्या समझ आ रहा है? Tax cuts means what? That the government must have given some concession in tax. Basically, they must have reduced the tax that had to be paid by corporate houses, also known as corporate tax. अभी मैंने सिर्फ हेडलाइन पढ़ी है, right? Why would I want to reduce corporate tax? मैंने आगे आर्टिकल पढ़ा ही नहीं. Tell me, why would any government want to reduce corporate tax? Reduction in corporate tax. अब इससे पता चलेगा आपने क्या रिवाइज किया आज से पहले. Reduction in corporate tax leads to what? Reduction in corporate tax leads to what? जो एग्रीगेट सप्लाई लिख रहा है वो गलत है. Whoever is writing aggregate supply is wrong. नहीं, step by step. Business taxes. Corporate tax is a direct tax. It is not an indirect tax.
डायरेक्ट टैक्स हम पढ़ेंगे when we read fiscal policy, maybe after inflation and monetary policy. बिजनेस टैक्स कम करने से क्या बढ़ता है? स्टेप बाय स्टेप. Reduction in business taxes, we read, was a determinant of investment in the economy. Correct? We have read this. If business taxes get reduced, investment gets pushed up. Investment is a component of aggregate demand. है ना? ये पढ़ा है ना हमने? So if I reduce business taxes, what is going to happen? Let's see. This is price level. This is real output or simply output. This is aggregate demand. This is aggregate supply. As I will reduce the business taxes from aggregate demand 1, level will shift to aggregate demand 2. Price level अभी के लिए छोड़ देते हैं. Earlier, this was the output y1, now the output is y2. So why would I want to remove corporate taxes? Why would I want to do this? I would do this to encourage investment, and I would do this to create more jobs in the economy, because as the output has increased here, unemployment would reduce here. यहां तक किसी को डाउट है? किसी को कोई डाउट है इसमें? This should be pretty clear to you. पढ़ चुके हैं हम ये सारी चीजें. अब आज का जो हिंदू का आर्टिकल है वो क्या कह रहा है? देखो, this whatever we have studied, ये हम सब पढ़ चुके हैं. Whatever is here, this is a theoretical understanding. ये एक theoretical, अगर हम बात साइंटिफिक करें तो this is a scientific thinking. This is not an observed phenomena. हो सकता है ये करने के बाद भी बिजनेस टैक्सेस जनरली ड्राइव अप इन्वेस्टमेंट, बट हो सकता है कि मेरा टैक्स कम हो और मैं फिर भी इन्वेस्ट ना करूं. राइट? इट इज स्टिल पॉसिबल दैट आई माइट नॉट इन्वेस्ट. इट इज स्टिल पॉसिबल दैट आई चूज नॉट टू इन्वेस्ट. आई जस्ट वांट टू कीप अक्यूमुलेटिंग प्रॉफिट्स. आइडियली ऐसा होना चाहिए. दिस हैज बीन सीन कि ऐसा होना चाहिए. राइट? बट क्या पता लोग ना करें. पीपल आर जस्ट ग्रीडी. पीपल माइट बी जस्ट ग्रीडी ऑल्सो. राइट? So now this article in today's Hindu, in today's Hindu, this article is talking about what? अब ये है जादू. I will make you read this article to understand. देखो, tax cuts may have saved rupees 3 lakh crores for India's corporates. Correct? देखो, अब इस आर्टिकल को यहां से पढ़ते हैं. We will read from here. Read this. While the intent behind such changes, which changes are these? Reduction in corporate tax, was to encourage private investment. बिल्कुल बात सही है. Create jobs. बिल्कुल बात सही है. And establish a globally competitive business environment for certain domestic companies. This we will read when we read international economics. जब हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तब हम ये पढ़ेंगे. प्रोफेसर दास गुप्ता says there is little evidence to suggest that tax incentives make businesses more competitive. Right? तो क्या बात कर रहा है यहां पे? ये कह रहा है कि intent behind these changes, intent behind reducing business tax was what? Increasing in private investment. ये कह रहा है कि इंटेंट बिहाइंड दीज टैक्सेस, cutting these taxes, reducing these taxes was to encourage private investment, was to create jobs in the economy. But
एक्चुअली शायद ये बात देखी नहीं गई है, राइट? नाउ दिस लाइन is the key line of this article, because actually ये हुआ या नहीं, actually ये हुआ या नहीं will rarely be asked in prelims, because this is opinion, this is Professor Das Gupta's opinion, but the intent is something that is universally agreed, right? Now just by reading this line, अगर आपने सिर्फ ये line पढ़ी होती, while the intent behind such changes was to encourage private investment and create jobs, maybe you might not have understood the logic behind all of this, but now this line is clear to you. I hope this much is clear. समझ आ रही है ये बात? Now this line is making sense to us because we understand this logic, right? And if you are still confused as to why only aggregate demand has moved and not aggregate supply has moved, that means you have simply not revised, right? थोड़ा बढ़िया लगा ये जादू? अभी I just read a message in the chat saying कि सर आप जो भी पढ़ाते हो, how does it appear in the newspaper the next day? I am not doing anything special. Here. These are merely the concepts of economics applying to the real world. हमने पढ़ा, ये आज की न्यूज थोड़ी है, ये 5 साल पहले 2019 में गवर्नमेंट डिसाइडेड टू कट कॉर्पोरेट टैक्स. नाउ ओनली द एनालिसिस इज कमिंग, ऑफ इट, राइट? कंसेप्ट्स वही हैं, वी आर जस्ट सीइंग दैट जो कंसेप्ट्स हम पढ़ रहे हैं वो लोग रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं. हमने जब डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड पढ़ा, उसमें एक डिटर्मिनेंट ऑफ बिजनेस इन्वेस्टमेंट में हमने बिजनेस टैक्सेस पढ़ा. जब बिजनेस टैक्सेस कम होते हैं तो दे इन्वेस्ट more jobs are created, and exact same line is written in the Hindu, but we will not know this. अगर हमें ये नहीं पता होता तो हम ये आर्टिकल पढ़ के ये बात नहीं समझ पाते. We would just be mugging up. That is the point I'm making, right? Now चलो, अब let us continue. Now let us continue with what we have to read today. Yesterday we were reading two things, GNP and GDP. We read that GNP is the final value of goods and services produced by nationals, that is citizens of a country. GDP is final value of goods and services produced in the domestic territory, or rather the better word is economic territory of a country. तो कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, आई एम जस्ट गोइंग टू क्लोज द चैट. है ना? देखो, मैंने आपसे कल ये क्वेश्चन पूछा था कि अ मैक्सिकन इज वर्किंग इन द अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया. इन दिस केस हमने कल यहीं पे खत्म करी थी क्लास. द जीएनपी goes to Mexico because the national is of Mexico, and US embassy's American territory, this goes to GDP of USA. यही हमने देखा था. This is where we left off last time, right? Just one second. Yeah, this is exactly where we stopped last time, right? Okay.
यहां तक क्लियर है? आई होप इट्स क्लियर टिल हियर. यहां तक कोई डाउट नहीं? यहां तक कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, परफेक्ट. अब आगे चलते हैं. लेट्स मूव ऑन फ्रॉम हियर. अब देखो, we were reading this is what we were reading. GNP is gross national product. Gross national product में national word is there to indicate citizens of the country irrespective of their location. GNP will be final value of or value of final goods and services produced by Indians in a given time period, usually a year, and Indians are located in wherever part of the world does not matter. Since Indians are Indian nationals, their production will count in GNP. अब एक काम करते हैं, हम जीडीपी और जीएनपी के बीच में एक रिलेशन ड्राइव करने की कोशिश करते हैं. व्हाट इज जीडीपी? हम इंडिया की जीडीपी और जीएनपी को रिलेट करते हैं. जीडीपी इज इक्वल टू आउटपुट ऑफ इंडियंस इन इंडिया प्लस आउटपुट ऑफ फॉरेनर्स इन इंडिया. GNP will be equal to output of Indians in India plus output of Indians abroad. Basically, GDP is all of the output that is being produced in India. चाहे इंडियंस इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे हो, चाहे फॉरेनर्स इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे हो. GNP is all of the output that is being produced by Indians, चाहे वो इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे हो या आउटसाइड इंडिया प्रोड्यूस कर रहे हो, अब्रॉड प्रोड्यूस कर रहे हो. Now, if I have to make a relationship between this, I can say that GDP plus output of foreigners in India is equal to, or rather GDP, sorry about this, GDP minus output of foreigners in India is equal to GNP minus output of Indians abroad. ये दोनों टर्म्स कॉमन थी, दिस टर्म एंड दिस टर्म इज कॉमन, तो मैंने इस टर्म के इक्वल है जीएनपी माइनस आउटपुट ऑफ इंडियंस अब्रॉड, और इस टर्म के इक्वल है जीडीपी माइनस आउटपुट ऑफ फॉरेनर्स इन इंडिया. तो अब मैं क्या करूंगा? I will now create a relationship between GDP and GNP. So I will say that GDP plus output of Indians abroad minus output of foreigners in India is equal to GNP. This should be clear. इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए. इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए. This is not a problem, right? ठीक है. अब हम इस टर्म को एग्जामिन करते हैं. What is this term? Output of Indians abroad minus output of foreigners in India. Output of Indians abroad. What is your output? What is your output? Output क्या था? Output we could relate from factor income. Output and factor income in our circular flow model, output and factor income was the same, right? So I can say that GDP plus net factor income from abroad, what Indians get from abroad, if Indians are producing some output,
Indians are producing some output. I am currently producing some output because of my labor. So I am getting some factor income. So whatever factor income Indians get from abroad, whatever factor income Indians get from abroad, factor income that Indians get from abroad, that will be their output, versus whatever factor income foreigners take from India. If foreigners are producing their output in India, जो भी आउटपुट वो प्रोड्यूस करेंगे उसके लिए उन्हें कुछ फैक्टर इनकम मिलेगी इंडिया से. I am producing a service in USA. I am sitting here, but I am producing, let's say, this course, or I'm giving or selling this course in USA. Americans will be buying it. And what will Americans be paying for? For my factors of production. So I am getting some factor income from abroad. Let's say a Chinese person is teaching this course to Indians. You will be paying him. You are paying him for his output. He is producing his output. He is a foreigner who is producing his output in India. Why are you paying him? You are paying him for his factors of production. So he will be deriving some factor income from India. I am deriving some factor income from USA. That Chinese person is deriving some factor income from India. If I have to find the net factor income, net means what is the difference? That will be net factor income from abroad. Net factor income. Let's say I earn from USA $100. He earns from India $80. Net income that has come into India is 20 rupees. $20, sorry, $20. So GDP plus $20 will be equal to GNP. Right? Is this clear? This is again something that should be obvious if you know the word factor income. This should not be a doubt. So GDP, the equation that comes in front of us is that GDP plus net factor income from abroad will be equal to GNP. Is this clear? Should not be a doubt. Right? Up. Now you tell me which is greater? GDP is greater or GNP is greater? This is greater or this is greater? ये बताओ क्या बड़ा है? मुझे दिक्कत ही नहीं होती है जब तुम गलत बोलते हो. जब तुम लाइन से सारे लोग गलत आंसर देते हो ना, अब मुझे फील ही नहीं होता कि बिकॉज तुम्हें जल्दी आंसर देना है. सोचना थोड़ी है. गलत आंसर देना है पहले, फिर मैं डांटूंगा, फिर सही आंसर आएगा. दिस इज नाउ आवर मोडस ऑपरेंडी इन दिस क्लास. और देर आर सम पीपल जिनके नाम मुझे याद हो गए हैं. आई लुक एट देयर आंसर्स एंड आई फील कि ये लोग भी नहीं सोच रहे हैं. मतलब मुझे काफी सैड लगता है. मुझे एक बात बताओ, चलो अब मैं दोबारा लिखता हूं ये इक्वेशन. जो काम तुम्हें करना था वो मैं करता हूं. जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मींस व्हाट? इनकम और फैक्टर इनकम earned by Indians from abroad. जैसे मुझे $100 मिल रहे थे माइनस फैक्टर इनकम earned by foreigners from India is equal to GNP. Now this is what is net factor income from abroad, है ना?
यार अब मैं कैसे बताऊं जीडीपी ग्रेटर है या जीएनपी ग्रेटर है? इट डिपेंड्स ऑन दिस ना, इट डिपेंड्स ऑन दिस. It is possible that Indians are earning from abroad only $100. Foreigners are earning from India $120. In this case, what will be greater? GDP will be greater. GDP minus $20 will be GNP. It is possible in some other year, it is possible that Indians are earning $200 from abroad. Foreigners are earning $150 only from India. In this case, GNP will be greater. So it depends on value of net factor income from abroad. So इस पे आंसर क्या है? इस पे आंसर है that if NFIA is a positive value, then GDP is greater. If NFIA is a negative value, then GNP is greater. है ना? बिना सोचे क्यों जवाब देते हो? बिना सोचे जवाब दोगे तो प्रीलिम्स में फेल होगे. सब आता है तुम्हें, फैक्टर इनकम भी पता है, नेट वर्ड का मतलब भी पता हो. आई एम अज्यूमिंग यू नो द मीनिंग ऑफ नेट फैक्टर इनकम. ये चीज लिख के सोच के जल्दी आंसर देने का कोई भी यहां पर रिवॉर्ड नहीं है, सिर्फ गलत आंसर देने की पनिशमेंट है ना? तो प्लीज प्लीज, कई लोगों ने सही आंसर भी दिया था ऑफ कोर्स, बट प्लीज सोच के जवाब दिया करो. ठीक है, ओके. अब ये टर्म प्लीज ये लिख लो, प्लीज राइट दिस. ऑल्दो ये हैंड रिटन नोट्स ये वाले अब अपलोडेड है, बट फिर आई विल वांट कि आप एक बार ये चीज लिख लो. GNP is equal to GDP plus net factor income from abroad. Now net factor income from abroad can be positive or negative depending on the country, depending on the country's individuals. For example, there are many American countries in India, American companies in India. For example, Google is an American company that earns money from India. So the profits of Google go to USA. So it is a factor income. Profits are a factor income for entrepreneurship. Google is taking away factor income of India. They are taking factor income from India and sending it abroad. Right? So now it can be positive or negative depending on the country. It can be positive or negative depending on the country. If the value is positive, then GNP will be greater. If the value is negative, GDP will be greater. Right? It depends on the country. Positive or negative depends on the country. Right? Now, who is counted here? Only citizens are counted here. Citizens are counted here. And all factor incomes are counted. All factor incomes are counted. Not merely wages. Labor gives wages. Land gives rent. Entrepreneurship gives profit. Capital gives interest. All of these factor incomes are counted. Then we will calculate, we will see the value, then we will say whether GNP is greater or GDP is greater. Okay? Now, nowadays, we don't calculate GNP. In economics, earlier we used to calculate GNP, now we calculate GNI or gross national income, not gross national product. This is what we calculate. The value is the same. Since we know that production is the same as incomes, is the same as expenditure, we have already seen this. We calculate gross national income, not gross national product. The terminology that is generally used, you will not see GNP written, and ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है. In the economic textbooks that you read, generally gross national incomes will be written.
gross national income will be written. Value is the same. GNI is just easier to measure because it is easy to measure the incomes. It is easy to measure the incomes of Indians from abroad rather than the value of their output. GNI is what is calculated. GNI is what we calculate. This is just something that you will see in economic textbooks. Now, moving on. We have already seen value added method of counting GDP. We have seen that a producer produces a good. He does not know or she does not know whether it is intermediate good or final good. So instead of trying to differentiate the intermediate and final goods, what were we doing? We were merely checking the value added at each stage. So the sum of value added at each stage was the value of final goods. We have derived this yesterday when we were looking at the example of bakers and farmers. कल के एग्जाम्पल में हमने देखा था ये. So total value of final goods and services produced is the total value addition. Sigma means sum of value addition at all stages by all producers. Now once I am using this value added method, I do not need to differentiate between intermediate goods and final goods. What was the value added of a producer? Value added by a producer was value of output minus value of input. What is GDP? GDP की definition क्या है? Value of monetary value of final goods and services produced in an economy in a given year. So I can add the value addition of all goods and services by all producers and get GDP. This is the value added method of counting GDP. Value added method of counting GDP. यहां तक हमने कल कर लिया था. Now, यहां से आगे चलते हैं. Now, firstly, I want to discuss this term investment in a little bit more detail. There are some components of investment that I want to discuss. And from investment, after we discuss, then we will discuss the concept of depreciation, gross and net investment. And then we will come back to this gross value addition method of counting GDP. देखो, in an economic textbook, if you read an economic textbook, proper textbook, this is the definition we will read of investment. What do we know of investment? Investment is money spent on capital goods. And what are capital goods? What is the definition of the word capital? What is the definition of the word capital? Money spent on capital is investment. What is the definition of the word capital? याद करो. What is the definition of the word capital? Capital, not just the word capital, not capital factor of production. Capital की definition है future stream of benefits. Future stream of benefits, right? So, effectively, investment is expenditure on goods that are not consumed today but are used to create future wealth, right? So investment is expenditure on capital, right? यही हमने पढ़ा. Expenditure on capital. Capital is anything that is used to create future wealth. This also we have seen, right? Now, investment in the economy. Let's look at investment. One method of investment in the economy is that firms will purchase capital goods. Firms will purchase capital goods.
right? This investment, this firms purchasing capital goods like this digital board, like this pen, right? Firms purchasing capital good, this is known as GFCF or gross fixed capital formation. We will read up about these terms in detail when we go on and read business cycle. What is fixed capital, working capital, this we will see. Gross fixed capital formation is this one term, which is firms purchasing capital goods. So firms purchasing goods that are tools and technologies in production, right? So that is called gross fixed capital formation. Now, if I purchase this digital board today, let's say this digital board cost rupees 1 lakh. This digital board that is in front of me, it cost rupees 1 lakh. Now, the life of this digital board is 10 years. It is seen that generally, such digital boards, after 10 years, they will stop working. Generally, it is seen that after 10 years, such digital boards stop working. It might be that this digital board stops working in 1 year. It might be that this digital board does not stop working for 100 years also. But generally, it has been seen that digital boards like this, they stop working for after 10 years, right? So after 1 year, what is the value of this digital board? Today, its value is 1 lakh rupees. It's a new digital board. Its life is 10 years. After 1 year, what would its value be? आप कितनी वैल्यू असाइन करोगे इसको? कम तो होगी. आप कह रहे हो, अगर मैं वैसे देखूं, you say that for 1 lakh rupees you will get a board that generally keeps working for 10 years. So I can say broadly, this is not how the market works. But I can say that 90,000 rupees is the value that you will assign to this board if it will keep working for 9 years. Next year you will assign 80,000 rupees. Next year you will assign 70,000 rupees. Next year you will assign 60,000 rupees. Then 50,000 rupees. Then 40,000 rupees. That way you will keep assigning or reducing the value. अब ये reduction किस level पे होता है? It is generally not done in such a uniform manner. इतना uniform नहीं होता. But if I want, I can do this. If I want, I can do this. That I can say that, okay, if this board was going to last for 10 years, its cost is 1 lakh. Now it is going to last for 9 years. I've used it for 1 year. Now its value is 90,000. Now it's going to last for 8 years. Now its value is 80,000. ठीक है. अब देखते हैं. In this year or in my first year, I purchased one digital board. This is a capital good. What was the investment I made? Rupees 1 lakh. In my second year, I purchased one more digital board. Now what is the investment I made? Rupees 1 lakh. What is the total value? What is the total value of capital goods with me
at my second year? What is the total value of capital goods with me in my second year? In my second year, I have 2 digital boards. What is the total value of these digital boards? Assuming that the value is reducing in a uniform rate. Assuming that value is reducing in a uniform rate, this new digital board value is 1 lakh. Old digital board is now 1 year old. Value is 90,000. Total value of capital goods with my firm at the moment is 1.9 lakhs. But in 2 years, I have spent 2 lakh. So there is some factor that is missing here. Now, this digital board has lost 10,000 of its value in the second year. The first digital board loses 10,000 rupees of its value in the second year. Right? That is why this gap is coming. This loss of value is happening because of wear and tear. There will be some wear and tear that will happen. This annual wear and tear of capital goods is known as depreciation. Right? Annual wear and tear of capital goods is known as depreciation. Now, if in this example, I am to count what is the gross investment done by me. What is the gross investment done by me? Gross investment, total investment done by me is 2 lakh rupees. But net investment, net, that is actual investment that I have at the moment, the value of my investment at the moment is 1.9 lakh rupees. Gross investment is equal to 2 lakh rupees. Net investment is 1.9 lakh rupees. Depreciation that has happened is 10,000 rupees. This is this loss of value right here. So I can write that gross investment is equal to, or rather I should write net investment is equal to gross investment minus depreciation. Net investment is equal to gross minus depreciation. This is 2 lakh rupees. This is 10,000. This is 1.9 lakhs. Okay. Depreciation is the annual, every year, annual allowance for wear and tear that I make. Now, it is possible that this digital board stops working in 2 years only. It is possible that this digital boards keep working for 20 years also. Depreciation is merely done for the purposes of accounting. It is an accounting exercise done for my accounting purposes, for my measurement purposes. It has nothing to do with the real life of this digital board. I can choose to break this board even right now. I can pick up a hammer and break this board. That will not mean that depreciation has become 100%. Depreciation is mainly an accounting exercise. So for every good in the economy, there is a defined depreciation rate by the income tax officers. So the Central Board of Direct Taxes, when you will go to the CBDT, and you become an IRS officer, you can choose to define the depreciation rates of various items. For example, you can say that the depreciation rate of a car is 7.5% in the first year, 10% in the second year, 15% in the third year. That is up to you.
that is done for accounting purposes for the balance sheet of a company or for your own income tax purposes. It is merely an accounting exercise. But what is the name of the chapter that we are reading? The name of the chapter we are reading is National Income Accounting. And since we are doing accounting of national income, we are making a balance sheet of the national income, we have to ensure that depreciation is also factored in when we are counting things. Okay? Now, depreciation is the annual allowance of wear and tear in the economy. Depreciation is merely an accounting exercise. Right? Concept of depreciation is clear? Now, investment in the economy, one thing was firms were buying capital goods. This is gross fixed capital formation. If from gross fixed capital formation I have to get to net fixed capital formation, what do I have to do? If from gross fixed capital formation I have to get to net fixed capital formation, what do I have to do? I have to subtract the value of depreciation from GFCF. ग्रॉस से कुछ माइनस करूंगा तो नेट बनेगा, ग्रॉस से डेप्रिसिएशन माइनस किया तो नेट बना, राइट? ओके, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी. The second type of investment in the economy is, now this is important and you might not understand, so please pay attention. Now, there is a firm that produces t-shirts. There is a firm that produces t-shirts. It has produced 500 t-shirts at rupees 100 each. This is the only firm in the economy. It produces t-shirts. It has produced 500 t-shirts at rupees 100 each. The cost of its inputs was 0. Let's assume for a minute that cost of its input is 0. There is no input it's using. Okay, it from scratch, this firm does all the work itself, and from scratch it produces 500 t-shirts at rupees 100 each. If I count from the production method, what is the GDP at this point? I'm counting from the production method. Production method counts what? Either I can count final goods, their monetary value, or I can count gross value addition. In both cases, what is the GDP at this case? It is 500 into 100, because input cost is 0. Fine, and t-shirts are final goods, so it is 50,000 rupees. At this moment, the GDP as counted from the production method is 50,000 rupees. Okay? Now, let me now count this same GDP. This firm goes to households. This firm goes to households to sell these 500 t-shirts. This firm goes to households to sell these 500 t-shirts. However, households are only purchasing 300 t-shirts. Households are only purchasing 300 t-shirts. There is no government. There is no external sector. There is no government. There is no external sector. There is only this one firm and households.
Firm has produced 500 t-shirts at rupees 100 each. GDP from production method, GVA or final goods, however you want to count, as 50,000. Households only purchased 300 t-shirts. Now what is the GDP if counted from expenditure method? What is the GDP when counted from expenditure method? Good. It is 30,000, or at least it looks like 30,000. It looks like 30,000. हमें लग रहा है 30,000 है नहीं 30,000. But you are right in saying that it looks like 30,000. What are we not accounting for when I am looking at this method? What am I not accounting for? I am not accounting for unsold goods. I am not accounting for unsold goods. For expenditure method of GDP calculation, the formula we use is C plus I plus G plus X minus M. There is no external sector, there is no governmental sector, so expenditure here is C plus I. Right? But I have not accounted for these 200 unsold shirts. Now consider the firm's perspective. For the firm, these 200 t-shirts, they can be sold in the future, yes or no? They can be sold in the future. Right now, this year they have purchased 300. In the future they can be sold, yes or no? If they are sold in the future, what will the firm get out of it? If they are sold in the future, what will the firm get out of it? They will get some future benefit from this. They will get some future benefit from these 200 t-shirts, even though they are not sold today. Right? But they are likely to get some future benefit, profit, whatever it is. It is factor income, not only profit, but they will get some future benefit from it. So what do these 200 t-shirts become? What can I also call these 200 t-shirts? I can call them capital. What is the money spent on capital called? What is the money that is spent on capital called? Investment. Now when I'm measuring the expenditure measured, I have to measure two things: consumption and investment. Consumption here is of 300 t-shirts, so consumption is of 30,000 rupees. Investment is the value of 200 t-shirts, because these are capital now. So investment is 20,000. 200 into 100. And what is now the GDP with expenditure method? 50,000. Same as GDP with production method. Right? So there cannot be a discrepancy in this formula. We have seen that production becomes equal to incomes, becomes equal to output, becomes equal to expenditure. So even in the expenditure method, it should be 50,000 only. So investment, what we have read so far is investment includes gross fixed capital formation. It also includes
change in inventory. What is inventory? The stock of goods that a company holds. Right now, this company has 200 shirts in its inventory. It has 200 shirts in its inventory. Inventory is the stock of goods that a company holds. Right? Company has the ability to store some goods. Right? So investment also includes this term. Now, investment in an economy also includes a third term. ये देखते हैं क्या है. We have seen that there are some households in the economy. Now, households also purchase certain goods that are expected to give them a future stream of benefits. Households also purchase certain goods that are going to give them a future stream of benefits. The most common of these goods is real estate or land or property. Household, ये हम पढ़ चुके हैं वैसे. Households also purchase real estate, right? Households purchasing real estate. This is done why? Why does anyone purchase land? There can be two reasons only. One is for own use. You want to use it. Second could be that there will be expectation of future benefit. कि अभी ले लेते हैं, बाद में इसका प्राइस बढ़ जाएगा. Right? Even if you are purchasing for your own use, even if you are purchasing from your own use, you are bound to get a future stream of benefit in the sense that either you will not have to pay rent to someone or you can use that land to get rent from someone. So both these cases are actually expectation of future benefit. So real estate is also capital. Real estate is also capital. So investment in the economy includes three things. Firms buying capital goods, known as gross fixed capital formation. Change in inventory, that is sometimes unsold goods, unfinished goods, etc. And residential investment, that is purchase of real estate. So investment in the economy includes all these three terms. Now, इसके आगे हमने पढ़ना था depreciation, that we have read. Gross investment and depreciation and net investment, this relationship also we have read. Net investment is equal to gross investment minus depreciation. Now, let us now come to the same gross value added method that we are studying, GV method of calculating GDP. Right? Gold, stocks, stock exchange, etc. We will look at it when we read capital and financial markets, not now. It will confuse you because even shares you might think are investment. हम आएंगे उस पे. We'll come to it when the time comes. Now, GDP. GDP was value of final goods and services produced in an economy in a given time, usually 1 year. Now, we have read in microeconomics that value was equal to quantity into price. ये हम पढ़ चुके थे, याद है? हमने ये ग्राफ में भी देखा था. This was giving us the value quantity into price. We have read this before. Now, the question is, which price level should I use? Now the question is, when I am measuring GDP,
I will simply say the quantity, total quantity of all goods and services produced and price level of all respective price levels. Which price level should I use? On the basis of this, there are various classifications. One is based on variation in time. Second is different prices in the production process. We will now understand these two things. Chalo. Now let me give you an example to make you understand this. Consider a hypothetical economy. This is a hypothetical economy. All this economy produces, the only thing that this economy produces are pens. All this economy produces are pens. देखो, in this year, or let's say last year, this economy produced 10 pens. The price of pens was rupees 50 per pen. What is the GDP? लोग अच्छा ठीक है, I'll stop. लोग अच्छा ठीक है, I'll stop. ऐसा कुछ है नहीं जो तुम्हें बोर्ड पे देखने की जरूरत हो, सुन के भी समझ आ सकता है. वैसे कुछ है नहीं इशू ऐसा यार, मुझे दिख रहा है आराम से. आई थिंक अब तो बिल्कुल ही ठीक है. नाउ इट इज कंप्लीटली ओके. ठीक है, टेंशन मत लो. अगर थोड़ा बहुत मिस भी हुआ है तो हम यहीं से देख लेंगे. डोंट नीड टू वरी. कुछ ऐसा अभी तक कोई ऐसी कोई बात बताई नहीं है, कोई नई बात अभी बताई नहीं है ना. नथिंग न्यू हैज बीन डिस्कस्ड येट. देखो, लास्ट ईयर दिस, मैं कह रहा हूं एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी है. हाइपोथेटिकल इकोनॉमी है जो सिर्फ पेन्स प्रोड्यूस करती है. लास्ट ईयर दिस इकोनॉमी प्रोड्यूस्ड 10 pens. The price of pen was 50 rupees per pen. Input cost 0 है. You can forget input cost. What is the GDP of this country? 10 pens. These are all final goods. ठीक है? These are all final goods. 10 pens are produced. 50 rupees per pen. What is the GDP? 500 rupees. This year, this economy produces 12 pens. But the price of pens is now 100 rupees per pen. What is the GDP this year? इस साल क्या GDP है? इस साल GDP क्या है? 1200 रुपए. Is it fair for me to say? Is it fair? अब भावना समझनी है, भावना मन की आंखों से देखना है. Is it fair for me to say that this country's GDP has grown by more than twice? Is it fair? Fair लग रही है ये बात? पहले 10 पेन प्रोड्यूस किए, अब 12 पेन प्रोड्यूस किए. Is it fair कि मैं बोलूं कि इस कंट्री की GDP दुगनी से भी ज्यादा हो गई है? But fact is it has become more than twice. है ना? It has become more than twice. But is there actual increase in production? No. Production has only gone from 10 to 12 pens.
Production has only gone from 10 to 12 pence. If I say that GDP has increased by more than twice, it's not wrong. गलत नहीं है ये बात. It's not wrong. But it's not fair. Right? It's not wrong to say that GDP has gone from 500 to 1200. गलत नहीं है. But it's not fair. The comparison does not seem fair. Right? Production only has become from 10 to 12. Fair नहीं लग रहा है comparison. बात बोलने में गलत नहीं है, but the comparison is not fair. Ideally, if I want to compare, ideally, I should say that I should fix the price of pens. I would say that this year GDP is rupees 500. This year GDP as per last year prices is 12 into 50 equal to 600. Right? So now it seems like a fair comparison. That earlier it was 500, now it has become 600. I can choose to fix the price. Right? Now, if I am continuing in this manner, when I say that GDP is actually 1200, I will say this is GDP at current prices. At the current price level in the economy, GDP is 1200. But if I have fixed the price, I have fixed that pens are rupees 50 only, I want to do a comparison. In this case, I will say this is GDP at constant prices. समझ आया? GDP at current price, GDP at constant price. Right? Now, अब आपके लिए क्वेश्चन है, who is the nominal head of government? Who is real head of government? Who is the nominal head of government and who is real head of government? De jure head of government, nominal head of government, as per norms, as per the name, as per the norms, it is president. It is president. But real house of power, real head of government is prime minister. Right? President is the nominal head. देखने में nominally for norms, नाम से के लिए हम कह देते हैं कि president is head. Right? But actual head of government is prime minister. Right? Actual head of government is prime minister. Right? Same logic we will apply here. The figure of 1200, the figure of 1200, which is at current prices, this is namesake, nominal GDP. The figure of 600, which is at constant prices, it is the actual real GDP.
This is the real GDP. Right? 1200 at current prices is nominal GDP. 600 at constant prices is real GDP. If I look at it, the nominal GDP seems to be inflated in value. Nominal GDP seems to be inflated in value. Seems to be inflated in value. What is causing this inflation? In value, what is the difference between nominal and constant prices GDP, nominal and real GDP? What is the factor that is causing this high rise? अरे डिमांड सप्लाई छोड़ो, जो सामने दिख रहा है उस पर बात करते हैं. इट इज द प्राइस चेंज. It is the difference in prices. It is the difference in prices. This inflationary value, this inflated value, बढ़ी हुई value सिर्फ प्राइस चेंज की वजह से दिख रही है, बिकॉज यहां मैंने दोनों प्राइस और क्वांटिटी दोनों काउंट किए, यहां मैंने सिर्फ क्वांटिटी काउंट किया. If I want to write it in an equation, I can say that nominal GDP for 2024 is quantity of items produced in 2024 into price level of 2024. Real GDP for the year 2024 is equal to quantity of items produced in 2024 into price level of 2023. ये बात समझ आ रही है? ये बात समझ आ रही है? मैंने 2023 पे फिक्स कर दिया था, है ना? In nominal GDP, I am counting 12 pence, multiplying them by 100. In real GDP, I am counting 12 pence, multiplying them by 50. This is 1200. This is 600. What is the factor that has actually changed between nominal and real GDP? What is the factor that has changed between nominal and real GDP? What is the only factor that has changed here? What is the only factor that has changed here? Price level has changed, right? Price level has changed. Here price level in the economy was 50. Now price level in the economy is 100. Quantity तो same है. So this inflated price, this higher GDP, this inflated GDP is there because of changes in price level, right? Now, what is the change in price level called? Or rather, change की जगह I would say increase in price level is known as what? Increase in price level is known as? Increase in price level is known as what? Inflation. It is due to inflation. It is due to inflation that this GDP appears to be in an inflated value. Because of inflation, this GDP appears to be in a inflated value. Right? If I want to see the factor of inflation, if I want to see the factor of inflation,
or by what value should I deflate the GDP? I have just realized that nominal GDP is at an inflated value. Nominal GDP is actually at value of 1200. Real value of GDP is 600. है ना? What factor or what number, what is the factor that I should deflate the nominal GDP by to get back to the real value? What is the factor with which I should deflate this? Inflation का उल्टा deflation. What is the factor by which I should deflate this, that I should get back to this? I need to halve it. Right? आधा कर दूंगा. Or I can say that I need to deflate by a factor of 2. Divide by a factor of 2. Deflation कम करने को ही कहते हैं. इसको हाफ करूंगा तो यहां पहुंच जाएंगे. Or I can say I need to deflate by a factor of 2. I can say that I need to deflate by a factor of 2. ये बात समझ आ रही है? I need to deflate by a factor of 2. Right? This is clear? ये बात समझ आ रही है ना? Deflate by a factor of 2. If I want to say I will divide the nominal GDP by real GDP, GDP at current prices by GDP at constant prices, what will I get here? 1200 by 600 equal to 2. Right? I have to deflate. I have to deflate the nominal GDP by a factor of 2 to get to real GDP. I have to deflate nominal GDP by a factor of 2 to get real GDP. This calculation of nominal GDP by real GDP is equal to GDP at current prices divided by GDP at last year's prices is known as GDP deflator. GDP deflator. ठीक है? This is GDP deflator. In our case, what is the value of GDP deflator? It is 2. ठीक है? This calculation, nominal GDP divided by real GDP, is GDP deflator. The value of this is 2. ठीक है? अब what does this GDP deflator indicate? जो भी इसकी वैल्यू है ये क्या इंडिकेट करती है? What does it indicate? That is the question. What does this GDP deflator indicate? What was the price level of pens in this economy in 2024? इस साल का प्राइस लेवल क्या है? 100. Price level of pens in 2023 was 50. 100 by 50 is equal to 2. 2 is also my GDP deflator.
Can I say that from 2023 prices have actually increased 2 times? Can I say that from 2023 prices increased 2 times in 2024? तभी तो ये वैल्यू आई प्राइस, यही हमने, दिस वाज आवर ओरिजिनल assumption. This was the original assumption. 10 pence 50 per pen, 12 pence 100 per pen. So prices have increased 2 times from 2023 to 2024. What is the increase in price level called? What is the increase in price level called? It is called inflation. And inflation here is of 2 times. GDP deflator is also 2. Right? अब ये कैसे हो रहा है? GDP deflator is equal to nominal GDP by real GDP. Nominal GDP here in this case is quantity of pens in 2024 into price of 2024. Real GDP is quantity of pens in 2024 into price of 2023. This term is constant. So GDP deflator is actually price of 2024 divided by price of 2023, and this is nothing but inflation. So in this case, the real GDP was rupees 600. Real GDP was rupees 600. The nominal GDP was rupees 1200. This gap of 2x was there only because of inflation, not due to an actual production increase. प्रोडक्शन नहीं बढ़ी थी, प्रोडक्शन इतनी नहीं राइज करी थी. ये जो रियल और नॉमिनल का गैप है, ये सिर्फ प्राइस लेवल राइज होने से दिखा रहा है. देयर इज नो एक्चुअल राइज इन प्रोडक्शन इन दिस केस. प्रोडक्शन नहीं बढ़ी है. व्हाट हैज इंक्रीज्ड? Production has not increased. What has increased? Only the prices have increased. Only the prices have increased. Only the price level has gone up. Real GDP or the amount of output, this is actually potential GDP, but amount of output has not increased. Amount of output has not increased. Only the price levels have gone up. Only the price levels have gone up. Therefore, if I calculate GDP at current market price, I call it nominal GDP. If I calculate it at last year market price, I call it real GDP. If I calculate it at current market price, I call it nominal GDP. If I call it at last year market price, I call it real GDP. This is 120 rupees. This is 100 rupees. This is 50 rupees. If I divide these two terms, nominal by real GDP, I get GDP deflator, and GDP deflator is a measure of inflation. ये clear है? Is this clear?
GDP deflator is not measuring. GDP deflator is comparing nominal and real GDP both of the year 2024 only. There is no comparison happening from 2023. Two more pens have been produced relative to 2023, but we are not comparing from 2023 in GDP deflator. We are merely dividing the nominal GDP of 2024 by real GDP of 2024. That's it. That's all we are doing here. That's it. यहां पर 2023 से कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है. GDP deflator is merely a measure of inflation. GDP deflator is merely a measure of inflation. Now, let us now take a break for 3 minutes and we will continue with base year calculation. Graph is absolutely not required in this case. Absolutely not required. जितने questions आज तक आए हैं उनमें ग्राफ बनाने की जरूरत पड़ी नहीं. It's not required, so you can let it go. देखो, ये जो प्राइस लेवल वाला कॉन्सेप्ट है, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस लेवल्स इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, this we will actually understand in inflation. Till we don't read inflation, we cannot read these price levels. For now, it is sufficient for you to know that GDP deflator is nominal by real GDP and GDP deflator is an indicator of inflation. When we will see how price levels are measured, we will see what is CPI, what is WPI, what is indexation, what is a price basket, and we will understand how inflation is measured. Then we will understand the logic of GDP deflator and how it is different from this. That is the main thing that we have to understand, the difference between GDP deflator and CPI or WPI. For this, we need to understand a basket of goods and price. We will understand this when we read inflation. अभी के लिए अगर आपको इतना पता है that GDP deflator is an indicator of inflation,
This much is more than enough for now. GDP deflator अगर आपको पता है is nominal by real GDP. We have done our jobs. Okay. Now, this was on the basis of market price. We were seeing that current year's price or last year's price. What am I measuring? Let's say अभी हमने क्या किया था, हमने 2023 की GDP कंपेयर करनी थी with 2024 GDP. So what I did in this case was, मैंने 2024 की क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन देखी 12 पेंस और मैंने 2023 की क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन देखी 10 पेंस. 2023 में प्राइस था 50 रुपीज पर पेन, 2024 में प्राइस था 100 रुपीज पर पेन. ठीक है. मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि मैं इस प्राइस को इधर फिक्स कर देता हूं, मैं इसी प्राइस से कंपेयर करता हूं. यहां की जीडीपी को मैं कहता हूं 500 और यहां की जीडीपी को मैं कहता हूं 12 into 50 which was 600. मैंने कहा यहां पर फिक्स कर देते हैं, राइट. बट दिस इज ओनली कंपैरिजन ऑफ 2 years. ये तो 2 ही ईयर का कंपैरिजन है. What do I need to do now? I need to see if, let's say, I have to compare 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. मुझे इन सब की जीडीपी आपस में कंपेयर करनी है. नाउ व्हाट डू आई डू? अब मैं क्या करूं? Now what can I do? I have to compare the GDP of 2017, 18, 19, 20, 21, 22. ये सारी जीडीपी मुझे कंपेयर करनी है आपस में. Now what do I do? क्या करूं मैं? I will need to find 1 year जिसपे मैं प्राइस लेवल्स फिक्स कर दूं. Let's say that year can be 2016. मैंने 2016 पे प्राइस लेवल्स फिक्स किए. Then at 2016 price levels, I will calculate 2017 GDP, 2018 GDP, 2019 GDP, 2020 GDP, 2021 GDP, 2022 GDP. एक ईयर पे मेरे को प्राइस लेवल्स फिक्स करने पड़ेंगे. And then for every year I will calculate. For 2023 also I will calculate at 2016. 2024 also I will calculate at 2016. This year at which I fix the price levels, this year in an economy is known as base year. I consider this to be the base. From this base, I don't change the price. In 2017, I will not change the price. If I have to calculate the GDP now of 2017, what will I say? Quantity of production in 2017 into price levels of 2016, because this is my base year. If I have to calculate the GDP of 2021, I will say quantity produced in 2021 into price levels of 2016. I will not change this amount because I don't want to see the increase in inflation. मुझे एक्चुअली इंक्रीज इन जीडीपी देखना है, मुझे रियल इंक्रीज देखना है, मुझे इन्फ्लेटेड इंक्रीज नहीं देखना. I don't want to inflate the values on the basis of price level. I merely want to see the increase in quantity. I want to see the increase in quantity. जितनी क्वांटिटी ज्यादा है गुड्स और सर्विसेज की, उतनी प्रोडक्शन ज्यादा हुई है. जितनी क्वांटिटी ज्यादा है उतनी प्रोडक्शन ज्यादा हुई है. आई वांट टू सी द इंक्रीज इन क्वांटिटी बिटवीन दीज ईयर्स. आई वांट टू कीप द प्राइसेस फिक्स्ड. नाउ whichever year I select for this, let's say I have selected 2016 in this case. For all further years till I change this year, जब तक मेरा 2016 फिक्स किया हुआ है, जब तक भी मैं जीडीपी मेजर करूंगा, I will measure it at this level. Price level I will keep of 2016. Price level I will keep of 2016. For every year's GDP, I will multiply quantity produced in that year into price level of 2016.
that will be the GDP of that year. Is this clear? 2019 में quantity in 2019 into price level of 2016, 2022 में quantity of 2022 into price level of 2016. मैं यही करूंगा because I don't want to see change in price level. मैं प्राइस लेवल में चेंज नहीं देखना चाहता. I want to see change in quantity. Change in quantity will tell me change in production. मुझे actual production में change दिखाएगा. Right? It will show me actual change in production. Okay. ठीक है. अब देखते हैं. Now let us understand. This year of 2016, I have selected this as base year. Now from 2017 onwards, I will measure GDP on the basis of these price levels. So अब आपको सोचना है, you have 2 minutes to think, how do I select a base year? बेस ईयर सिलेक्ट कैसे किया जाता है? बेस ईयर सिलेक्ट कैसे किया जाता है? और विच ईयर शुड आई सिलेक्ट एज बेस ईयर? मुझे कौन सा ईयर सिलेक्ट करना चाहिए एज बेस ईयर तो ये बात ठीक रहेगी? व्हाट डू यू मीन प्रोडक्शन ईयर अक्षय? हर ईयर में प्रोडक्शन हो रही है? Somebody is saying I know 2021 12 is selected but I don't know why it is selected. अभी समझ आएगा why it is selected. देखो I have जो भी ईयर में सिलेक्ट करूंगा, whichever year I select, है ना, देखो जिस भी ईयर को मैं सिलेक्ट करूंगा, अब मैं उसी के बेसिस पे, on the basis of that year, I will keep measuring my GDP for a very long time. On the basis of prices of this year, I will now keep measuring my GDP. जो भी इस ईयर का प्राइस लेवल है, even 2024 GDP, I will measure on the basis of quantity produced in 2024 into price level of base year. तो price level of base year matters a lot, and price level of base year will always be used in my calculation of GDP. बहुत टाइम तक मैं इस बेस ईयर के प्राइस लेवल को यूज करता रहूंगा इन जीडीपी कैलकुलेशन. सो देयर इज एक्चुअली ओनली वन क्राइटेरिया जो कई लोगों ने बताया भी है, दैट बेस ईयर शुड एक्चुअली बी अ नॉर्मल ईयर, जहां ज्यादा कुछ ना हुआ हो, जहां कुछ बहुत ज्यादा ऊंचा नीचा ना हुआ हो इकोनॉमी में, जहां प्राइसेस बहुत हाई भी ना हो, बहुत लो भी ना हो, जब कोई इंटरनल डिस्ट्रप्शन भी ना हो, कोई एक्सटर्नल डिस्ट्रप्शन भी ना हो, कोई स्ट्रक्चरल चेंज इन द इकोनॉमी भी ना हो, कोई वॉर भी ना हो, नॉर्मल ईयर हो इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन. ऐसा भी ना हो कि फ्लड आ गया हो, ऐसा भी ना हो कि ड्रॉट आ गया हो, ऐसा भी ना हो कोई मेजर अर्थक्वेक आ गया हो, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही अच्छी प्रोडक्शन हो गई हो. राइट? इट शुड बी अ नॉर्मल ईयर, एवरेज ईयर. तभी मेरे को एक एवरेज लेवल मिलेगा ना. मुझे एक एवरेज ईयर चाहिए. प्रॉब्लम क्या है कि ऐसा पीस मार्केट में है ही नहीं. ऐसा कौन सा ईयर आया आज तक जिसमें ऐसा कुछ भी ना हुआ हो जो कोई मेजर इवेंट हो? ऐसा कुछ ना कुछ हर साल होता है. पॉइंट इज देयर शुड नॉट बी मेनी abnormal incidents that impact price. ऐसे तो 20 years से America had occupied and invaded Afghanistan. Since the global war on terror started,
the Americans had occupied and invaded Afghanistan, right? After 9/11 happened, they were staying in Afghanistan. But was that war impacting price levels in India after some time? शुरू में तो किया होगा. When that would have started after 9/11 in 2001, शुरू में impact किया होगा. But now, was it impacting the price levels? Over time, चीज stabilize हो जाती है. Russia-Ukraine war is affecting global price levels today. If the war does not stop for next 10 years, it will stop affecting global price levels. तो मुझे एक ऐसा ईयर चाहिए. The year I need is such a year where the prices appear to be stable. कम से कम 200 मैसेजेस आ चुके हैं चैट में कि हमारा बेस ईयर 2011-12 है. ठीक है, 200 लोग कम से कम ये बात बता चुके हैं. यार देखो, ये होता है फैक्ट. दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट. ये कोई भी याद कर लेगा. बेस ईयर सिलेक्ट कैसे करते हैं जब मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं, तब ये बताना रेलेवेंट नहीं है. इस बात को समझो. समझो हाउ अ बेस ईयर इज सिलेक्टेड. ये किसी ने नहीं बताया होगा आज तक. ये हर किताब में लिखा है ना. ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाई दिस ईयर वाज सिलेक्टेड और व्हाई एनी बेस ईयर इज सिलेक्टेड. मैं आपको ऑप्शन देता हूं. यू आर आस्क्ड to select the next base year for the Indian economy and you are given 4 options: 2016, 2017, 2018, 2020. Which will you select and why? अब बताओ. अब बताओ, ये एक्चुअल यूपीएससी क्वेश्चन है. एक गलत जवाब आ गया. दो गलत जवाब आ गए. अब लगाओ दिमाग. काफी सही जवाब भी हैं. नहीं आता तो बोल दो डोंट नो. In 2016, demonetization happened in the Indian economy. In 2017, GST was introduced in the Indian economy. In 2020, COVID struck the Indian economy. So given a choice out of these years, I should ideally select 2018. It is not like any major event came. 2018 is not a good choice because it was the next year after GST. Overall, it's not a very good choice, right? But these three are definitely not normal years in the Indian economy. These three are definitely not normal years in the Indian economy. Since demonetization was done, it must have affected price levels and production. GST also must have affected. It's a structural change, huge change in the economy. COVID was a huge disruption. This was also a structural change in the economy. So here price levels must not have been stable. Here price levels have been stable. In this case, price levels were stable. So I can select 2018. This is how a base year is selected. Now, base year is a fixed year in the past that is used for GDP comparisons over a long time. How do I select a base year? It must be a stable year. There must not be any war, famine, shocks, droughts, floods that impact price levels. Prices should not be volatile in this year. Production basket must be nearly same. अब ये पॉइंट मैं समझाता हूं आपको. No structural change in the economy such as GST, demonetization or pandemic. Now let me ask you two things. One year is 2004-5. ये 2004 क्यों नहीं लिखते, 4-5 क्यों लिखते? Because this is how financial calculations are done. We will see this. One year is 2011-12. Assuming that in both years the price levels were almost stable,
which is a better year to select? Out of these 2 years, which is a better year to select? 2004-5 or 11-12? If the price levels in both years were relatively stable, which is the better year to select as per you? सब बोलेंगे 11-12 क्योंकि 11-12 इंडिया का एक्चुअल है. Why? ये है, सबको पता है ये एक्चुअल बेस ईयर है. Why? क्यों? Why is 11-12 बेटर? बताओ 11-12 क्यों बेटर है? अरे रीसेंट है तो क्या हो गया? रीसेंट से क्या फायदा होगा? रीसेंट से क्या हो गया? ये किसी को नहीं पता. है ना? बस रट रखा है क्योंकि बेस ईयर, तो ये सबको पता है कि ये होना चाहिए. क्यों ये रीसेंट है? ये भी रीसेंट से फायदा क्या है? इसका एक भी सही आंसर अभी तक नहीं देखा मैंने. अब देखो मैं बताता हूं. In 2005 you were producing cassette players. In 2005 you were not even producing a single iPhone in the economy. Today in 2024 India is producing iPhones. India might not be producing even a single cassette player. At this time, at least some iPhones were being produced, and cassette players had started to decline. मेरे को अभी कैलकुलेट करने के लिए करना क्या है? 2024 की जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए क्वांटिटी ऑफ ऑल गुड्स प्रोड्यूस्ड इनटू प्राइस लेवल ऑफ देयर रिस्पेक्टिव गुड्स, ये करना है. इस साल अगर कोई ऐसा गुड प्रोड्यूस हो रहा है, इस साल लेट से कोई ऐसा गुड प्रोड्यूस हो रहा है जो 2004 में था ही नहीं, then it becomes very difficult for me to calculate. Now I will have to extrapolate कि इस गुड का 2004-5 में क्या प्राइस लेवल होता, then I would calculate. तो जितने ऐसे गुड ज्यादा आएंगे, जितने ऐसे गुड ज्यादा आएंगे, उतना my GDP estimation will become subjective. If let's say today India is producing such digital boards, no such digital boards were produced in 2004-5. Now if I have to calculate the GDP of 2024, I will say 100 digital boards produced into price level of 2004-5. This I don't know. So I will have to estimate that in 2004-2005, what would have been the price of this digital board. तब जाके मुझे जीडीपी मिलेगी. Versus if I am taking this year, it is possible that in this year one or two digital boards were produced, less were produced, but they were still produced. So at least I will be aware of the price levels. मुझे price levels तो पता रहेंगे कम से कम, right? So the difference between the production basket meaning total goods produced in this year and this year, 2024 से 20 साल पहले अगर मैं डिफरेंस इन ऐसे गुड्स देखूं जो अब प्रोड्यूस हो रहे हैं और तब नहीं हो रहे थे, वो बहुत ज्यादा होंगे. 10 साल पहले उतने सारे नहीं होंगे, थोड़े और कम होंगे. तो द मोर रीसेंट इट इज, द बेटर विल बी माय जीडीपी एस्टिमेशन, right? It will be a better GDP estimation. It will never be perfect, but it will be better here than it will be here. समझ आई ये बात? So when I am selecting a base year, I should select that production basket must be nearly the same, nearly the same. So the more recent it is, the better it is. ठीक है? This is the criteria I use to select a base year. Now, अभी तक मैंने क्या देखा? I saw GDP on the basis of variation in price level and this variation in price level was over time.
लास्ट ईयर प्राइस लेवल, दिस ईयर प्राइस लेवल, बेस ईयर प्राइस लेवल, है ना? इट वॉज द वेरिएशन इन प्राइस लेवल ओवर टाइम। लास्ट ईयर का प्राइस लेवल, इस साल का, बेस ईयर का, क्वांटिटी में कोई वेरिएशन नहीं था, और प्राइस लेवल में भी जो वेरिएशन था वो टाइम के बेसिस पे था। नाउ आई विल डू अ डिफरेंट वेरिएशन. Now I will see GDP on the basis of price level based on various price levels in the production process. अब मैं टाइम पे वेरिएशन नहीं करूंगा, अब मैं प्रोडक्शन प्रोसेस पे वेरिएशन करूंगा. जब मैं प्रोडक्शन प्रोसेस पे वेरिएशन करता हूं तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्राइस लेवल्स. वन इज मार्केट प्राइस, वन इज बेसिक प्राइस, वन इज फैक्टर कॉस्ट. अब ये समझते हैं. GDP at market price, GDP at basic price, GDP at factor cost. Now, उसी इकोनॉमी में वापस जाते हैं जहां पर हम थे. दिस इकोनॉमी इन 2024, अब इसके पहले का भूल जाओ. 2024 में दिस इकोनॉमी हैज प्रोड्यूस्ड हाउ मेनी पेन्स? 12 पेन्स. What is the price of these pens? ₹100 per pen. GDP I calculated was ₹1200. अब ये प्राइस क्या है? This price is the price that is paid in the market, or price that is paid by the consumer. Price that is paid by the consumer. जिसने पेन खरीदा, मैंने पेन खरीदा, मैंने पे किया ₹100. ये मार्केट प्राइस है. मार्केट प्राइस इज प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर. है ना? आई हैव पेड ₹100. I have paid ₹100 for this pen. It is market price paid by consumer. This is market price. ठीक है. अब मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंस समझो. लेट से यू आर इन फाउंडेशन कोर्स ऑफ सारथी IAS. Our foundation course is definitely one of the most affordable in the market. It is of 20,000. This is what you have paid. Foundation course of Saarthi IAS. You have paid 20,000. 20,000 is market price. But what did Saarthi IAS receive? What did Saarthi IAS receive? क्या मिला हमें? We got 17,000 plus GST. This GST went to the government. GST went to the government. 17,000 was received by Saarthi IAS. Okay. 17,000 is received by Saarthi IAS. Now, let's say in this arrangement, government says that if you buy, government says to you that if you buy foundation course at Saarthi IAS, you only need to pay 18,000. We will pay 2,000. गवर्नमेंट आपको कहती है that if you want to buy the foundation course at Saarthi IAS, you only need to pay 18,000. We will pay 2,000. तो क्या होगा?
what happens now to market price? Market price will become 18,000. You will pay 18,000. You are the consumer. You are paying 18,000. Government pays to Sarthi IS 2,000. You pay to Sarthi IS 18,000. What does Sarthi IS get? 17,000. Government gets GST, which is 3,000. This is not sort of subsidy. This is subsidy only. This is a product subsidy. This is exactly subsidy. ऐसे ही तो मिलती है सब्सिडी कि आप पूरे पैसे मत देना, आप पूरे पैसे मत देना, आप 18,000 आप दे दो, 2,000 हम दे देंगे. So government has given subsidies also. Now, what consumers pay? कंज्यूमर जो पे करता है उसे हम कहते हैं मार्केट प्राइस. है ना? Now, what Sarthi IS is receiving, what will Sarthi IS do with it? Either it will give rent, either it will give wages, either it will give interest, either it will give profit. These are what? Payments made. Sarthi IS कोई इंसान थोड़ी है. Sarthi IS cannot retain money of its own, right? Sarthi IS is not an insan. Sarthi IS will distribute what it earns. These are payments made for factors of production or cost of factors of production. Correct? So Sarthi IS in this case gets rupees 17,000. This is its factor cost. Cost of factors of production. Factor cost. Sarthi IS की तो cost है ना. Sarthi IS की तो cost है ना factors of production की. This is the cost Sarthi IS is paying for its factors of production. So factor cost. So now in this example, we can see that market price is 18,000. Factor cost is 17,000. Tax by the government is 3,000. And subsidy by the government is 2,000. ये चार चीजें हैं ना, यही चार चीजें हैं. So I can say that factor cost plus tax minus subsidy will become the market price. Factor cost is 17,000. Tax is 3,000. Subsidy is 2,000. Market price is 18,000. So factor cost is what? Factor cost is what firms receive. Factor cost to market price, I have to add the taxes, I have to reduce the subsidy. है ना? ये बात क्लियर हुई? ये बात क्लियर हुई?
somebody is asking how is tax and subsidy given on the same product. ठीक है, होता है ऐसा, जैसे मान लो जो भी आप टैक्स रेट दे रहे हो 18% जीएसटी, वो 18% जीएसटी इज सेम फॉर द 18% जीएसटी इज सेम फॉर द एंटायर एजुकेशन इंडस्ट्री, राइट? बट सारथी आईएएस को स्पेशल सब्सिडी मिली हुई है गवर्नमेंट से, राइट? अगर सब्सिडी ना मिलती इस केस में अगर सब्सिडी नहीं होती तो ये फैक्टर 0 होता। एंड दिस इज द एक्चुअल केस राइट नाउ। अभी सारथी आईएएस के कोर्सेज पे कोई सब्सिडी तो नहीं है, तो आप क्या पे करते हो? यू पे 20,000, सारथी आईएएस को क्या मिलता है? 17,000। बीच में क्या है? टैक्स, 3,000 टैक्स जाता है। $17,000 plus tax is what you pay. 17,000 plus tax is what you pay. अगर सब्सिडी मिल जाती तो आप कम पे करते। गवर्नमेंट ने अगर 2,000 रुपए सब्सिडी दे दी तो यू विल पे 18,000। हमें तो फिर भी 17,000 नहीं मिलेंगे, बिकॉज यहां पर आई विल पुट द वैल्यू ऑफ -2,000। तो 17,000 प्लस 3,000 माइनस 2,000 इक्वल्स टू 20,000। हम अगर 17,000 में प्रोड्यूस कर रहे हैं, सारथी आईएएस अगर 17,000 में प्रोड्यूस कर रहा है, राइट, तो सारथी आईएएस तो 17,000 में ही प्रोड्यूस करेगा। दिस इज रियल एग्जांपल ऑफ दिस, ये एक्चुअल रियल एग्जांपल है। टैक्स लगता है 3,000 हमारे फाउंडेशन कोर्स पे, जीएसटी दे रहे हो आप 3,000। इससे ज्यादा रियल एग्जांपल क्या होगा? अच्छा, अब कई लोगों का ये डाउट है, व्हाट अबाउट प्रॉफिट? देखो एक्चुअली पता है क्या है, आप लोगों को लगता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस प्रॉफिट is equal to cost of sale. Is this correct or wrong? Is this correct or wrong? This is absolutely wrong. अगर आपको ये करेक्ट लग रहा है, that means you have not understood factors of production. Please go and read factors of production again. अगर आपको ये सही लग रहा है तो ये बिल्कुल गलत है, ये 100% गलत है। ठीक है, ये हमें बचपन में पढ़ाया जाता है जब हमें प्रोडक्शन का मतलब नहीं पता होता। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड की कॉस्ट आती है रेंट, लेबर की कॉस्ट आती है वेज, कैपिटल की कॉस्ट आती है इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप की कॉस्ट आती है प्रॉफिट। ये मिला के बनता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रॉफिट इज अ नॉर्म, हमें एक्चुअली दिस इज अ प्रॉब्लम, वी डोंट अंडरस्टैंड दैट प्रॉफिट इज अ नॉर्मल थिंग, प्रॉफिट इज अ गुड थिंग। अब नॉर्मल प्रॉफिट इज अ बैड थिंग। हम अगर ये कोर्स 2 लाख रुपए का बेचने लगे, देन इट विल बी अब नॉर्मल प्रॉफिट। जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो तो चाहिए ही ना, नहीं तो फिर कोई एंटरप्रेन्योरशिप करेगा क्यों? इफ देयर इज नो नॉर्मल प्रॉफिट, देयर इज द नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ एनी गुड is included in its cost of production. What is the entrepreneur contributing here? Risk, management, organization, taking responsibility. इनके बिना क्या प्रोडक्शन हो जाती? नहीं होती। सिंस इनके बिना प्रोडक्शन नहीं होती, जो इनकी कॉस्ट है, एंटरप्रेन्योरशिप की कॉस्ट है, इस रिस्क, इस मैनेजमेंट, इस ऑर्गेनाइजेशन, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो कॉस्ट है, उसी कॉस्ट को प्रॉफिट कहा जाता है। जैसे इस ऑफिस के बिना प्रोडक्शन नहीं होती, इस ऑफिस की कॉस्ट या इस ऑफिस के लैंड की कॉस्ट रेंट है,
इस डिजिटल बोर्ड के बिना प्रोडक्शन नहीं होती, इसकी कॉस्ट इंटरेस्ट है। मेरे बिना प्रोडक्शन नहीं होती, मेरी कॉस्ट वेज है। और वरुण सर ने जो रिस्क लिया हुआ है, जो वो मैनेजमेंट कर रहे हैं, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब कुछ ढंग से चलता रहे, वो एंटरप्रेन्योरशिप है और उसकी कॉस्ट प्रॉफिट है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड्स ऑल ऑफ दिस। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड्स प्रॉफिट्स। और ये बात अभी तक क्लियर होनी चाहिए थी आपको। सो whatever Sarthi IS receives, 17,000 rupees, it distributes in its factors of production. It is the cost of factors of production. One of these is also known as factor cost. This includes profit. What firms receive is factor cost. What you pay is market price. You are paying market price. Market price is 20,000. What Sarthi IS is receiving is 17,000. There is a difference of taxation here. Taxation is 3,000. This is what? GST. Who is paying GST to the government? Who is actually depositing GST to the government? Sarthi IS is depositing this GST to the government. But who is bearing the burden of this GST? Burden कौन bear कर रहा है? You are bearing the burden of this GST. You are bearing the burden of this GST. GST is therefore called the indirect tax. हम ये पढ़ेंगे बाद में. अब मान लो सारथी आईएएस आपको बोलता या गवर्नमेंट आपको बोलती कि आप 20,000 मत दो, आप 18,000 दो, 2,000 हम दे देंगे सारथी आईएएस को. If government would have told you in the same scenario that आप 20,000 मत दो, आप 18,000 दो, आपको कोर्स मिल जाएगा, जो बचे हुए 2,000 हैं वो हम दे देंगे. तो गवर्नमेंट क्या करती? Government has given you a subsidy on this item. Government has told you that you only pay 18,000. If you pay 18,000, then what happens? This becomes market price. Sarthi IS gets 2,000 from government, 18,000 from you. Sarthi IS gets 20,000. Out of this, Sarthi IS has to deposit 3,000 as tax. Sarthi IS still gets 17,000 as factor cost. So I can write now that factor cost, market price, factor cost plus taxes minus subsidy is equal to market price. अरे गवर्नमेंट सब्सिडी और टैक्स सेम चीज पे लगा रही है. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. बिकॉज ऑफ सब्सिडी अमाउंट हैज द टैक्स अमाउंट चेंज्ड? Has the tax amount changed? No. Subsidy and tax amounts are separate. Factor cost here is 17,000. Tax have to be added 3,000. Subsidy has to be subtracted 2,000. Market price is 18,000. If there is a subsidy, you are only paying 18,000. If there was no subsidy, you would be paying, जो अभी actual case है, you are paying 20,000. यही तो है. This is what it is, right? अभी यही तो पे करते हो आप. 17,000 plus 3,000 is what you pay.
यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? अभी हम इसका क्या अरे यार संकेत, कैन यू स्टॉप स्पैमिंग एट द मोमेंट प्लीज? आई विल ब्लॉक यू नेक्स्ट टाइम यू स्पैम। वो तब से स्पैम किया जा रहा है, इक्वेशन इज रॉन्ग, इक्वेशन इज रॉन्ग। अरे मैं जैसे लिखता हूं, मैं एरो यहां से यहां कर दूंगा तो साइन चेंज हो जाएगा। लॉजिक समझो ना, ये तो रियल लाइफ एग्जांपल है ये। इतना तो मान लो कि मैं गलत इक्वेशन नहीं याद करके आऊंगा यार। मतलब आई रियली डोंट नो समटाइम्स हाउ टू हैंडल these things. This is what has actually happened when you have paid for this course. We have received 17,000. I have received, you have paid 20,000. अब एक और चीज देखते हैं। This is Sarthi IS. This is Sarthi IS. At the point of release of this course from Sarthi IS, at the gate of Sarthi IS, at the gate of Sarthi IS, it is 17,000 rupees. At the gate of Sarthi IS, it is 17,000 rupees. As soon as it goes to the market, मैं कहता हूं market, as soon as it goes to the market, taxes get added to this, subsidy gets subtracted, and it becomes market price. ठीक है? Taxes, subsidy, market price. Clear? अब देखो, is this actually the true factor cost? ये ट्रू फैक्टर कॉस्ट है क्या? ये सोचने वाली बात है। इज दिस द ट्रू फैक्टर कॉस्ट और नॉट? दिस इज द क्वेश्चन। देखो, सारथी आईएस के पास, लेट्स से वी हैव लैंड एट अ डिस्काउंटेड रेट। हमें यहां पर रेंट नहीं देना पड़ता। लेट्स से हमें रेंट नहीं देना पड़ता, राइट? गवर्नमेंट हैज सेड टू सारथी आईएस, you don't have to give land, you don't have to give land, rent on land you don't have to give, we will give for you. Government, this is taxes and subsidy on the product. जब प्रोडक्ट आ गया मार्केट में, उस प्रोडक्ट पे क्या टैक्स और सब्सिडी लग रहा है? गवर्नमेंट मान लो हमें कहती है कि तुम्हें लैंड पे रेंट नहीं देना, यू आर एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वी डोंट वांट टू चार्ज रेंट फ्रॉम यू, प्लीज डोंट पे एनी रेंट। ठीक है? गवर्नमेंट हमें कहती है यू हैव टू गिव अस इलेक्ट्रिसिटी, सिंस यू आर अ कमर्शियल इंस्टीट्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी वी विल टेक कमर्शियल रेट फ्रॉम यू, we will take commercial rate from you in terms of electricity. That means we will tax your electricity supply. We will tax your electricity supply. अब ये तो 17,000 वो है जो हमने प्रोड्यूस करके बाहर भेजा। 17,000 प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगा, प्रोडक्ट के ऊपर सब्सिडी लगी, प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस बन गया। बट यहां भी तो कुछ टैक्सेस और सब्सिडी मिल रही है। लेट मी एक्सप्लेन दिस अ लिटिल बिट डिफरेंटली। There is a farmer. Farmer puts in his field seeds. Farmer puts in his field fertilizer. He produces wheat at 1,000 rupees per kg. When it enters the market, this wheat is taxed at 100 rupees per kg and you pay 1,100 rupees per kg. This is the market price of wheat. This is the price at farm gate. जैसे ही फार्म से निकला ये प्राइस था, मार्केट में टैक्स लग गया, सब्सिडी कोई मिलती नहीं, तो 1,100 रुपए मार्केट प्राइस है। बट there are some other taxes and subsidies also acting here. These seeds are subsidized.
This fertilizer is taxed. These seeds are given to the farmer at a subsidy. This fertilizer is given to the farmer after the imposition of certain tax. If I remove the effect of subsidies and tax, let's say मैं यहां पर सब्सिडी की हटा देता, सीड्स एक्चुअली 100 रुपए की हैं, बट फार्मर को 50 रुपीज की मिलती हैं. मान लो मैं सब्सिडी का इफेक्ट हटा देता, what would have happened to the price of wheat? मान लो मैं यहां से सब्सिडी हटा देता, what would have happened to the price of wheat? It would have increased. बढ़ जाता प्राइस. सब्सिडी 50 रुपए की मिल रही है यहां पे, अगर मैं सब्सिडी हटा देता, ये सब्सिडी में हटा देता, तो प्राइस ऑफ व्हीट बढ़ जाता. सेकंड क्वेश्चन, मान लो मैं ये टैक्स हटा दूं, I remove this tax that the farmer has to pay. सब्सिडी सेम है, सब्सिडी एज इट इज है. फार्मर पहले फर्टिलाइजर के लिए 500 रुपीज प्लस 100 रुपीज टैक्स दे रहा था, अब वो 100 रुपीज टैक्स नहीं दे रहा. What now happens to price of wheat? Decrease. Good. Price of wheat will now decrease. Farmer has to pay less. तो price of wheat will decrease. तो क्या 1000 ट्रू फैक्टर कॉस्ट है? Is it the true factor cost? No. 1000 is not the true factor cost. अभी भी इस फैक्टर कॉस्ट पे सब्सिडीज और टैक्स का इफेक्ट है. फैक्टर कॉस्ट वो होगी, फैक्टर कॉस्ट इज फ्री फ्रॉम इफेक्ट ऑफ टैक्सेस एंड सब्सिडीज. But this is not free from the effect of taxes and subsidies. Is this value free from effect of taxes or subsidies? No. This is also affected by taxes. या तो यही affect हो रही है टैक्स से, right? So true factor cost is something else. अभी हमें true factor cost नहीं पता. Tax and subsidy if applied here in the market. मार्केट में जैसे वीट आता है, यहां पर जो टैक्स और सब्सिडी लगती है, दिस इज अप्लाइड ऑन द प्रोडक्ट, नोन एज प्रोडक्ट टैक्स एंड प्रोडक्ट सब्सिडी. प्रोडक्ट टैक्स एंड प्रोडक्ट सब्सिडी. ये 1000 से 1100 हुआ बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट टैक्स. द प्राइस राइट हियर, ये जो 1000 रुपए है, दिस इंक्लूड्स द इफेक्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस सब्सिडीज एंड टैक्सेस. प्रोडक्शन प्रोसेस में ड्यूरिंग प्रोडक्शन जो सब्सिडीज मिली, ड्यूरिंग प्रोडक्शन जो टैक्सेस लगे, वो इसमें इंक्लूडेड हैं. ड्यूरिंग प्रोडक्शन ये प्रोडक्ट पे लग रहे हैं, ये प्रोडक्ट बनने के बाद लग रहे हैं, वीट आने के बाद लग रहे हैं, अभी प्रोडक्शन हो रही है. ड्यूरिंग प्रोडक्शन जो सब्सिडीज और टैक्सेस लगे, वो इस प्राइस को इंपैक्ट करते हैं. दिस प्राइस दैट गेट्स इंपैक्टेड बाय प्रोडक्शन सब्सिडीज एंड टैक्सेस बट नॉट बाय प्रोडक्ट सब्सिडीज एंड टैक्सेस. दिस प्राइस गेट्स इंपैक्टेड बाय प्रोडक्शन सब्सिडीज एंड टैक्सेस but not by product subsidies and taxes. This price is known as basic price. ये बेसिक प्राइस है. बेसिक प्राइस, ये बेसिक प्राइस है. बेसिक प्राइस से आगे जाएंगे, बेसिक प्राइस पे टैक्स लगा देंगे, सब्सिडी प्रोडक्ट पे लगाएंगे, तो मार्केट प्राइस बनेगा. प्रोडक्ट पे, वीट पे अभी प्रोडक्शन चल रही है,
प्रोडक्शन चल रही है उससे ये बेसिक प्राइस इंपैक्ट होता है। अब ट्रू फैक्टर कॉस्ट देखते हैं। व्हाट वाज द ट्रू फैक्टर कॉस्ट? ये फार्म है, इस फार्म में ड्यूरिंग प्रोडक्शन कुछ सब्सिडी मिल रही है, इस फार्म से कुछ टैक्स बाहर जा रहा है ड्यूरिंग प्रोडक्शन, ड्यूरिंग प्रोडक्शन भी कुछ सब्सिडी और टैक्स हो रहा है, राइट? वी नाउ आई वांट टू सी द ट्रू फैक्टर कॉस्ट। यहां से जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज बेसिक प्राइस, फिर लगता है प्रोडक्ट टैक्स, माइनस होती है प्रोडक्ट सब्सिडी, और बनता है मार्केट प्राइस। इतना तो क्लियर है? इतना, दिस मच इज क्लियर, यस और नो? दिस मच इज क्लियर, यस और नो? अभी वहां नहीं देख रहे, दिस मच इज क्लियर, यस और नो? जस्ट दिस मच। बेसिक प्राइस पे सिर्फ प्रोडक्ट की सब्सिडी और टैक्स इंपैक्ट करता है, ये तो साफ है यार, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब फैक्टर कॉस्ट देखते हैं। जो भी फैक्टर कॉस्ट थी, खुद सोचो क्या होगी इक्वेशन। वैसे तो इट्स वेरी इजी टू थिंक। फैक्टर कॉस्ट में भी मुझे ये सेम लॉजिक लगाना है, फैक्टर कॉस्ट में भी मुझे ये सेम लॉजिक लगाना है। तो थिंक व्हाट विल बी द इक्वेशन इन योर ओपिनियन। एक बार खुद खोल के देखो क्या ओपिनियन होगी, क्या बनता है आपके हिसाब से। एक सेकंड, चलो मैं आपको 2 मिनट का ब्रेक भी दे देता हूं, एंड ट्राई टू थिंक कि फैक्टर कॉस्ट और बेसिक प्राइस में क्या रिलेशन होगा, फिर मैं बताऊंगा। लॉजिकल है, बिल्कुल बिल्कुल लॉजिकल है। आप सब्सिडी हटा के देख लो, टैक्स हटा के देख लो। नहीं, ट्रू एफसी नहीं लिखो, वो बेसिक प्राइस है। हमें इक्वेशन निकालनी है, जैसे हमने बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी लिखा है मार्केट प्राइस, ऐसे सेम हमें इक्वेशन इस तरफ की भी निकालनी है। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑन दिस साइड। ठीक है, जो एग्जाम्पल लिया था वहीं से देखते हैं, इसी एग्जाम्पल से देखते हैं। फार्मर की बात करते हैं। फार्मर इज पेइंग 50 rupees for seeds. Farmer is paying 600 rupees for fertilizer. Wheat basic price is rupees 1000. That means farmer is keeping 350 rupees with himself.
अभी स्टेटस ऐसा है, अभी स्टेटस ऐसा है, 600 रुपए वो फर्टिलाइजर के देता है, 50 रुपए सीड के. अज्यूम देर इज नो अदर इनपुट. फार्मर कीप्स रिमेनिंग 350 विद हिमसेल्फ. सीड्स की एक्चुअल कॉस्ट इज ₹100, बट ही गेट्स अ सब्सिडी ऑफ ₹50. फर्टिलाइजर की एक्चुअल कॉस्ट is ₹500. He gets a tax of ₹100. So at this moment, what can I say? I can say 100 minus subsidy, which is actually 50, plus 500 plus tax, which is 100, plus 350 is equal to basic price. यही है ना? ये बात समझ आई? Is this equation clear? If this equation is clear, it will not be a problem. Is this equation clear? Yes or no? है ना? तो ठीक है, बस अब अगर ये लिख लिया मैंने तो अब तो कोई डाउट ही नहीं है. अब क्या दिक्कत है? 100 plus 500 plus 350 minus subsidy, which is actually 50, plus tax, which is actually 100, is equal to basic price, which is actually 1000. Now what is this value? 350 वो अपने पास रख रहा है ना, प्रॉफिट है उसका. 350 इज हिज प्रॉफिट. वो भी तो एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है. फार्मर खुद भी तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है. लेबर कॉस्ट मान लो, प्रॉफिट मान लो. व्हाट इज दिस वैल्यू नाउ? This is the actual value that is going to factors of production. 100 is going to seeds. Seeds are a factor of production. 500 is going to fertilizer. It is a factor of production. 350 is going to farmer. He is himself also a factor of production. This is the actual value that is going to factors of production. So it is actual factor cost. So I can say that true factor cost plus tax minus subsidy is equal to basic price. ये वो एक्चुअल पैसा है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जा रहा है. राइट? सो आई कैन राइट व्हाट? नाउ प्लीज राइट दिस इन योर नोटबुक एंड प्लीज डोंट फॉरगेट इट आफ्टर टुडे. जो मैं आप बोर्ड पे लिख रहा हूं प्लीज नोटबुक में लिख लेना एंड डोंट फॉरगेट इट आफ्टर टुडे. फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स minus subsidy is equal to basic price plus tax minus subsidy is equal to market price. ये क्या है? This is during production. So it is production taxes and subsidies. ये क्या है? This is product. So this is product tax and subsidies. ये क्वेश्चन इतनी बार आता है अलग अलग एग्जाम्स में, सीडीएस में, सीएपीएफ में, प्रीलिम्स में, और लोगों को ये क्लियर नहीं होता. और दिस कॉन्सेप्ट always remains something of a mystery for people कि फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस में क्या फर्क है. So I hope now it is clear and you can remember the example of this farm always. है ना? ये प्लीज लिख लो, प्लीज नोट दिस डाउन. जब हो जाए तो डन लिख देना.
अब एक बार आपको मैं आपके नोट्स दिखा देता हूं, इसमें ये सारी बात लिखी है। कंज्यूमर्स पे मार्केट प्राइस, कंज्यूमर्स पे मार्केट प्राइस, प्रोड्यूसर रिसीव फैक्टर कॉस्ट, producers will give this to wages, interest, profit and rent. This is cost of factors of production. हमने देखा ये लॉजिक, दिस इज द सेम लॉजिक, ये सेम लॉजिक हमने देखा, दिस इज व्हाट वी एक्चुअली केम टू। आप नोट्स पढ़ोगे तो एक और एग्जांपल सेम चीज का दिया हुआ है, फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी इज इक्वल टू बेसिक प्राइस, बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। ये क्यों पूछ रहे हो यार? इट मींस नोन एज, ठीक है, यही हमने अभी लिखा है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव रिटन राइट नाउ। अब ये इतनी राम कथा क्यों सुनाई? ताकि ये सेम चीज मैं जीडीपी पे लगा सकूं। आई कैन से दैट जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीडीपी at basic price if I put the effect of taxes and subsidies here. GDP at basic price will be equal to GDP at market price if I put the effect of taxes and subsidies here. अगर मैं टैक्स और सब्सिडीज का इफेक्ट यहां पर लगा दूंगा तब जाके मैं ये इक्वेशन बैलेंस कर सकता हूं। तो अब करके देखते हैं, सीधा यहां से यहां चलते हैं, लेट्स गो फ्रॉम हेयर टू हेयर। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स, चाहे वो प्रोडक्ट टैक्स हो चाहे वो प्रोडक्शन टैक्स हो, दोनों ही ऐड हो रहे हैं, बोथ आर गेटिंग एडेड, ये भी ऐड हो रहा है ये भी ऐड हो रहा है, प्लस और रादर माइनस सब्सिडी, चाहे प्रोडक्ट सब्सिडी हो या प्रोडक्शन सब्सिडी हो, दोनों ही माइनस हो रहे हैं, इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस। So I can write on the basis of this logic GDP at market price, उल्टा कर दिया मैंने, GDP at factor cost plus tax, product and production minus subsidy, product and production both. This is what we have read. ये सेम लॉजिक हमने अभी पढ़ा है, this same logic we have just understood, है ना? This same logic we have understood. अब जीडीपी जब कैलकुलेट होती है, जीडीपी जब एक्चुअली कैसे कैलकुलेट होती है हम अभी देखेंगे, देन वी विल रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस, कि एक्चुअली जीडीपी कैसे कैलकुलेट होती है, उसमें इस चीज की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एक्चुअल प्रोडक्शन तो यही है ना, एक्चुअल प्रोडक्शन तो यही है ना, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पास पैसे जा रहे हैं वो तो यही है ना, बाकी तो टैक्स और सब्सिडी है, दैट इज नॉट एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन इज दिस, राइट? एक्चुअल प्रोडक्शन तो फैक्टर कॉस्ट वाली ही है ना, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पास पैसे जा रहे हैं वही है ना एक्चुअल। तो ये सब तो टैक्स सब्सिडी ऊपर से लगाए हुए पैसे हैं, तो आई शुड मेजर दिस, राइट? नॉट दिस। This is what I should actually measure, not this, right? अब मान लो कहीं पे वर्ड लिखा हो, कहीं पे, अभी तो मैंने सबस्क्रिप्ट लगा रखा है, आई हैव पुट सबस्क्रिप्ट्स, लेट्स से समवेयर दिस वर्ड इज रिटन GDP, if nothing is specified,
इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, इफ इट इज नॉट स्पेसिफाइड, जीडीपी मींस जीडीपी एट मार्केट प्राइस. If nothing is specified, then GDP means GDP at market price. If word is written GVA, if nothing is specified, GVA means GVA at basic price. If nothing is specified, specify कर रखा है, अगर ऐसा लिखा हुआ है GDP at factor cost, then I know what this means. है ना? GDP is GDP at market price, GVA is GVA at basic price. क्या पढ़ा था हमने? बेसिक प्राइस से अगर मार्केट प्राइस पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा? ऐड करना होगा प्रोडक्ट टैक्स, सब्ट्रैक्ट करना होगा सब्सिडी गिवन ऑन प्रोडक्ट. ये पढ़ा हमने अभी. Therefore we can say GDP is equal to GVA plus tax on product, because GVA is at basic price. बेसिक प्राइस में प्रोडक्ट टैक्स ऐड करो, प्रोडक्ट सब्सिडीज हटाओ और बन जाता है जीडीपी, बिकॉज इट इज एट बेसिक प्राइस. अगर मैं लिखूं जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट तो मुझे प्रोडक्शन टैक्सेस और सब्सिडीज का भी इंपैक्ट लाना पड़ेगा, राइट? बट मैंने बेसिक प्राइस लिख दिया तो प्रोडक्शन का कोई नहीं. अब वी विल सी एट द फार्म गेट. सो हाउ डू वी डिफाइन दीज थिंग्स? Market price is defined as what consumers pay, what you pay. Basic price is defined as at the factory gate or at the farm gate. कि जब प्रोडक्ट जस्ट बना तो उसे बेसिक प्राइस कहते हैं. मार्केट में गया तो मार्केट प्राइस, और जो एक्चुअली प्रोड्यूसर को मिल रहा है वो फैक्टर कॉस्ट. The actual price that is going towards producer or factors of production, that is factor cost. This is how these three terms are defined. Factor cost से यहां जाने के लिए I add production taxes and subsidies, effect of production taxes and subsidies. यहां से यहां जाने के लिए I add effect of product tax and subsidies. This is the relationship between these three terms. अब देखो, नेक्स्ट 20 मिनट्स हमें कुछ लिखना नहीं है, हमें बहुत चीजें समझनी है. वो आपको लिखवाऊंगा मैं कल, या आपको नोट्स में उसके कल दूंगा. वी नीड टू अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स नाउ दैट आर फेयरली कंसेप्चुअल. मैं चैट ऑफ कर रहा हूं 20 मिनट के लिए. थोड़ा सा लॉजिकली हमें कुछ चीजें अब समझनी है इन द नेक्स्ट 20 मिनट्स. ठीक है, देखो अभी हमने देख लिया. Now if I say to you, या एक मिनट एक दो चीजें मैं आपसे पूछ लेता हूं पहले. Now if I say to you, I use the term, if I use the term now, GDP at current prices at factor cost. You understand what this means? You know what this means ना? ये बात समझ आई ना आपको? समझ आ रही है ना ये बात? क्या मतलब हुआ इन बातों का? देखो, आपको समझ आ रहा है, बट आपको याद नहीं होगा, तो प्लीज आज जाके रिवाइज कर लेना. प्लीज रिवाइज टुडे, प्लीज रिवाइज. ठीक है, प्लीज रिवाइज, ताकि आपको ये सब याद हो जाए. अब हम क्या समझना चाह रहे हैं? What we are now trying to understand is how is actually GDP measured in India. जीडीपी अब कैसे मेजर की जाती है, एक्चुअली कैसे मेजर की जाती है,
अब वो हम देख रहे हैं। अब देखो, अब थोड़ी सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड लॉजिकली एंड लिसन केयरफुली। आई नो लंबी क्लास होती है, टाइम खत्म होने वाला है क्लास का, बट दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी विल लर्न टुडे। नाउ अब देखो, मैंने क्या लिखा है बोर्ड पे? एक्चुअल एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। मैंने क्या नहीं लिखा बोर्ड पे? एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ जीडीपी। पहले इन दो वर्ड्स का मतलब समझते हैं। देखो, अगर मैं कहूं कि आई हैव टू मेजर द नंबर ऑफ आवर्स दैट ऑल ऑफ यू स्टडी, जितने भी लोग ये क्लास देख रहे हैं, आई हैव टू मेजर द नंबर ऑफ आवर्स दैट यू स्टडी, व्हाट विल आई नीड टू डू? I will have to contact every single one of you. And every single one of you, I will have to ask, how many hours do you study? That will be measurement. I am measuring every single one. I ask, कितने घंटे पढ़ते हो? Let's say there are 100 students here. I ask every single one. Then I say that I have 100 students in my class. All of them read these many hours. मैंने सबके 100 के 100 का डेटा लिया. I add these total hours. I divide by 100. I will get average hours that you study. है ना? This will be measurement of average hours. I will measure. मैं सबसे measure करवाऊंगा. तुम कितना पढ़ते हो? ये सबसे पूछूंगा, सबको ऐड करूंगा, 100 से डिवाइड करूंगा और बनेगा एवरेज. दिस इज मेजरमेंट. मेजरमेंट विल बी एब्सोल्युटली एक्यूरेट, क्योंकि मैं सबसे पूछूंगा, एक्यूरेट टू द एक्सटेंट दैट यू आंसर. A different thing could be I have to measure the average height of my students. So I will call all 100 of you. I will measure the height of every single person, add the height of every single person, divide by 100. I will know the average height. This is measurement. Second word is estimation. I want to estimate what is your height. What do I do? I only call 10 people. मैं मानता हूं कि इन 10 लोगों का एवरेज ले लेते हैं. जो इन 10 का एवरेज आएगा और जो एक्चुअल एवरेज होगा, वो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस थोड़ी होगा. थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, कोई बात नहीं. 100 लोगों की हाइट मेजर करना बहुत मुश्किल है, 10 लोगों की हाइट मेजर करना बहुत आसान है. तो मैं सिर्फ 10 की हाइट मेजर करता हूं और बात खत्म. नाउ द रियल क्वेश्चन इज, हाउ डू आई सिलेक्ट दीज 10? इन 10 को मैं कैसे सिलेक्ट करूं? Ideally, if there are out of 100 people in my class, let's say 50 are men and 50 are women, then out of these 10 also, 5 should be men, 5 should be women. If out of these 100, 20 are from Delhi, then out of these 10, 2 should be from Delhi. If out of these 100, 70 are from Bihar, then out of these 10, 7 should be from Bihar. If out of these 100, 50 or let's say 30 are non-vegetarians, then the same criteria should apply here, that out of these 10, 3 should be non-vegetarians and 7 should be vegetarians. Right? ये बात आई होप आपको समझ आ रही है. तभी तो ये एक एक्यूरेट एस्टिमेट बनेगा. मेजर तो मैं किसी का भी कर सकता हूं, राइट? एस्टिमेट मैं किसी का भी कर सकता हूं, बट टू बी एक्यूरेट I have to ensure that these 10, what am I ensuring here? I am trying to ensure कि ये जो 10 हों, they represent these 100. ये 10 इनको represent करते हों, जितनी क्लोज हो सकता है उतना क्लोज represent करते हों. That way
my estimate will be as close to the actual number as possible, right? Close to the actual number as possible. If I estimate this number, it will be close to the actual number if they represent these people. These 10, the 10 that I have chosen, they are known as a sample. और आप most optionals में, in most of your optionals, you will read about sampling. What is sampling? रैंडम सैंपल, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग एंथ्रोपोलॉजी में है, साइकोलॉजी में है, सोशियोलॉजी में है. सैंपल क्या है? यहां पर सैंपल है एक स्मॉल ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बिग ग्रुप. दीज आर टोटल स्टूडेंट्स, दीज आर सैंपल, एंड ये जो सैंपल हैं दे मस्ट बी अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल. अब मैं सैंपल ले क्यों रहा हूं? वाई एम आई टेकिंग अ सैंपल? बिकॉज इट मेक्स माई जॉब इजी. आई ओनली हैव टू मेजर 10 पीपल्स हाइट. अब यहां तो 100 लोग थे. इन एन इकोनॉमी, इन आवर इकोनॉमी, इन इंडिया इकोनॉमी, देर आर एक्चुअली, एंड ये फैक्ट है, दिस इज एन एक्चुअल ट्रू नंबर, देर आर क्लोज टू 10 करोड़ फर्म्स. What do you want to find out? You want to find out the value added by each of them. Then you will come to GDP. सबकी value added आप निकालना चाहते हो. So you will have to check the balance sheets of 10 crore firms every year to get to GDP. तो इससे बेटर तरीका क्या है? That I take a representative sample, and from this representative sample I estimate the GDP. It's a much easier process as compared to looking at everyone and trying to measure the GDP. I can estimate the GDP. Is this much clear? क्या इतना साफ हुआ? समझ आया क्या है ये? Good. Now अब जरा दोबारा आपकी आवाज थोड़ी बंद करते हैं. बिफोर 2015, बिफोर 2015 कैसे मेजर होता था ये? ऑफ कोर्स इट विल नॉट बी कंप्लीटली एक्यूरेट, बट 10 करोड़ फर्म से जाके पूछने, दिस इज द बेस्ट अप्रोच वी हैव. नहीं तो हमें एक साल की जीडीपी निकालने में 10-15 साल लग जाएंगे, है ना? हमें निकालनी भी तो 2-3 महीने में है. तो बिफोर 2015 what used to happen is there used to be something called an annual survey of industries. देखो, हर चीज के नाम में लॉजिक होता है. हर साल इंडस्ट्रीज से क्वेश्चंस पूछेंगे. क्या क्वेश्चंस पूछेंगे? व्हाट इज द प्रोडक्शन दैट यू डिड. कौन कराता था इसको? ये एक ऑर्गेनाइजेशन का आपने नाम सुना होगा, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. पहले ये सैंपल बनाते थे कि ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज लूं जो पूरी हमारी 10 करोड़ फर्म्स के रिप्रेजेंटेटिव हों, फिर उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछूं ताकि मैं जीडीपी निकाल सकूं. एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज में 20,000 फर्म्स को सर्वे किया जाता था और इनसे पूछे जाते थे क्वेश्चंस विद प्रोडक्शन मेथड.
प्रोडक्शन मेथड से इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे. क्वेश्चंस वर आस्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ नॉट वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड नहीं, प्रोडक्शन मेथड से क्वेश्चंस पूछे जाते थे, बिकॉज वैल्यू एडेड मेथड वाज टफ टू डू. 20,000 फॉर्म्स हम लेते थे, हम ट्राई करते थे एज रिप्रेजेंटेटिव एज पॉसिबल बन सके, और 20,000 फॉर्म से हम प्रोडक्शन मेथड के क्वेश्चंस पूछ के हम कुछ डेटा निकालते थे. फिर इसके बाद हम क्या करते थे, अभी ये तो सैंपल का डेटा है, दिस इज द डेटा ऑफ सैंपल. अब मुझे इस सैंपल के डेटा से एक्चुअल डेटा पे पहुंचना है. तो मैंने कहा कि इस सैंपल में आउट ऑफ 20,000 फॉर्म्स, लेट्स से ₹5,000 या 5 करोड़ मान लेते हैं, चलो ₹5 करोड़ इज द जीडीपी. देन आई वांट टू से कि टोटल कितनी फॉर्म्स हैं, एक्चुअल फॉर्म्स, ये भी किसी को काउंट करना पड़ेगा. ये भी तो काउंट करना पड़ेगा ना कि टोटल फॉर्म्स 10 करोड़ हैं, 8 करोड़ हैं, 9 करोड़ हैं, कौन से सेक्टर में कितनी है, एग्रीकल्चर में कितनी है, सर्विसेज में कितनी है, इंडस्ट्री में कितनी है, मैन्युफैक्चरिंग में कितनी है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. यहां पर कुछ डेटा मिलेगा और इस डेटा से मुझे यहां पहुंचना है एक्चुअल पे. तो मान लो मैं कहता हूं कि इंडिया में 20,000 फॉर्म्स हैं, वो 5 करोड़ का आउटपुट कर रही हैं. ये मेरा सैंपल डेटा है, ये मेरे सैंपल ने बताया. और फिर मैंने एक और सर्वे किया टू फाइंड आउट कि टोटल फॉर्म्स कितनी है. टोटल फॉर्म्स पता चला मुझे 10 करोड़ है. तो मैंने एस्टिमेट किया, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं, ऑब्वियसली इट्स अ मच मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, वेटेड एवरेज और ये वो बहुत कुछ होता है इसमें, बट इन अ सिंपलिस्टिक वे व्हाट दे यूज्ड टू से वाज 20,000 फॉर्म्स are doing output of 5 crore. One firm will do output of 5 crore by 20,000. India has 10 crore firms. So we will do 5 crore into 10 crore total output divided by 20,000 output. ये हमारा टोटल आउटपुट होगा ऑफ 10 करोड़ फर्म्स. और ये क्या है, जीडीपी. ऑब्वियसली इट वाज नॉट दिस सिंपल. जो ये फर्म्स ली जाती थी, इसमें एग्रीकल्चर की वेटेज, सर्विसेज की वेटेज, इंडस्ट्री की वेटेज, पॉपुलेशन की वेटेज, लोकेशन की वेटेज, साइज की वेटेज, सब लेके सैंपल कंस्ट्रक्ट किया जाता था कि बड़ी फर्म्स कितनी, छोटी फर्म्स कितनी, फॉर्मल कितनी, इनफॉर्मल कितनी, उनको वेट कितना देना है, किसका फैक्टर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितना है, सर्विसेज की कितनी फर्म्स लेनी है, इंडस्ट्रीज कितनी लेनी है, एग्रीकल्चर कितनी लेनी है. बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का पूरा काम ही यही था कि वो इस सैंपल को कंस्ट्रक्ट करे. ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिक्स आर इन्वॉल्व्ड हियर, बट इज द आइडिया क्लियर. तो एक सर्वे मैं करता था इन फर्म्स का, ये फिगर निकालने के लिए, और कुछ अलग अलग सर्वे से मैं ये फिगर निकालता था. एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री बताती थी कि कितनी एग्रीकल्चर फर्म्स हैं, डीपीआईआईटी बताती थी कि कितनी एमएसएमईज हैं, राइट. कॉमर्स मिनिस्ट्री कुछ और बताती थी, एजुकेशन मिनिस्ट्री बताती थी कितनी एजुकेशन फर्म्स हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री बताती थी कितने हॉस्पिटल्स हैं. उससे मैं ये डेटा निकालता था. तब जाके मैं समवॉट ऑफ अ कैलकुलेशन, बहुत सिंपल है, इससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करके मैं जीडीपी निकालता था. मेथड समझ आया. दिस इज बिफोर 2015 मेथड. 2015 से पहले हम ऐसे जीडीपी मेजर कर रहे थे. समथिंग लाइक दिस वी वर डूइंग उससे पहले. अब मुझे बताओ, अगर मैं आपको चॉइस दूं सैंपल बनाने की, बिग सैंपल्स विल बी मोर एक्यूरेट और स्मॉल सैंपल्स विल बी मोर एक्यूरेट. और प्लीज गलत मत बोलना कोई, इससे सिंपल क्वेश्चन हो नहीं सकता. बिग सैंपल्स आर मोर एक्यूरेट और स्मॉल सैंपल्स आर मोर एक्यूरेट, जस्ट टू सी कि आप जाग रहे हो, है ना. ऑब्वियसली बिग सैंपल्स आर मोर एक्यूरेट, राइट.
अभी हम क्या कर रहे हैं, हम 20,000 फर्म्स से 10 करोड़ फर्म्स को एक्सट्रैपोलेट कर रहे हैं, और मेथड भी हम यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन मेथड. एंड बिफोर 2015 the base year we were using was 2004-5. हम अभी क्या कर रहे थे, बिफोर 2015 बेस ईयर हमारा था 2004-2005, यूज कर रहे थे हम प्रोडक्शन मेथड, और 20,000 फर्म्स का एक एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज के बेसिस पे हम जीडीपी एक्सट्रैपोलेट कर रहे थे. व्हाट हैपेंड पोस्ट 2015? हमने अपना मेथड बिल्कुल चेंज कर दिया. हमने अपना मेथड बिल्कुल चेंज कर दिया. पहले तो हमने बेस ईयर बनाया 2011-12. दूसरा, हमने प्रोडक्शन मेथड से हम गए प्रॉपर जीवीए मेथड पे. हमने सैंपल को चेंज किया. कैसे चेंज किया हमने सैंपल को? हमने क्या किया, हर फर्म, जितनी भी फर्म्स होती हैं, जैसे सारथी आईएएस एक फर्म है, ये सारी फर्म्स रजिस्टर होती हैं एट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वेबसाइट. एटलीस्ट जितनी फॉर्मल फर्म्स हैं, इनफॉर्मल भी बहुत फर्म्स हैं इकोनॉमी में, फॉर्मल इनफॉर्मल का डिफरेंस देखेंगे. फॉर्मल फर्म सारी रजिस्टर होती हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे. यहां पर ये रूल बनाया गया कि सब लोग अपनी बैलेंस शीट अपलोड करेंगे. बैलेंस शीट में क्या लिखा है? बैलेंस शीट में लिखा है रेवेन्यू और इनपुट कॉस्ट. तो रेवेन्यू माइनस इनपुट कॉस्ट, रेवेन्यू माइनस इनपुट कॉस्ट, रेवेन्यू इज आउटपुट, आउटपुट माइनस इनपुट इक्वल टू वैल्यू एडेड. तो मुझे इन जितनी फर्म्स यहां पे रजिस्टर्ड थी उनका वैल्यू एडेड मिल गया, क्योंकि उनकी बैलेंस शीट यहां पे है. और कितनी फर्म रजिस्टर्ड थी एमसीए के पास? एमसीए के पास रजिस्टर्ड थी 15 लाख फर्म्स. 15 लाख फर्म रजिस्टर्ड थी. ठीक है. और क्या किया मैंने? आई डिड सम अदर चेंजेस ऑल्सो, सम माइनर, देयर आर सम माइनर चेंजेस, मतलब ऐसे कोई बहुत बड़े चेंजेस नहीं है. दीज आर द मेजर चेंजेस. कुछ और भी चेंजेस किए. कौन सी? जीडीपी देखेंगे, हेडलाइन एग्जांपल कौन सा देखेंगे, सेबी, पीएफआरडीए, आरबीआई, इन सब से भी डेटा लिया ताकि और एक्यूरेट हो सके, है ना. ये मैंने किया आफ्टर 2015. ठीक है. मैंने ट्रेड को बेटर काउंट किया, मैंने सब कुछ बेटर किया. आफ्टर 2015 आई चेंज माय मेथोडोलॉजी. बाकी चीज हम कल देखेंगे, बाकी स्मॉल चेंजेस हैं, ये मेन चेंजेस हैं. तो क्या हुआ, एक तो मेरा सैंपल साइज बहुत बड़ा हो गया. माय सैंपल साइज बिकेम मच बिगर. माय डेटा बिकेम मोर एक्यूरेट. पहले सर्वे था, पहले तो सर्वे था, मैं जाके पूछता था, सर्वे जाके मैं पूछता था. अब क्या किया मैंने? अब एक्चुअल रेवेन्यू और इनपुट कॉस्ट का मेरे पास डेटा है बैलेंस शीट का. सो डेटा इज ऑल्सो मोर एक्यूरेट. मेथड भी मैंने जीवीए का कर दिया. बेस ईयर भी मैंने क्लोज कर दिया, है ना. तो क्या होगा ओवरऑल इफेक्ट? पहले मेरा सैंपल वॉज 20,000, नाउ माई सैंपल इज 15 लाख. तो क्या होगा ओवरऑल इफेक्ट? इट विल बी मच मोर एक्यूरेट
it will be much more accurate. Our measurement of GDP will become much more accurate. है ना? चलो, कुछ दिखाया जाए आपको, थोड़ा सा जादू, फिर चले जाना। अब यही दिक्कत है कि जहां पर रटवा रखा है इकोनॉमी, वहां पर सिर्फ ये पता था कि बेस ईयर चेंज हुआ है बस। और ये मेंस मैंने दिया है, मुझे भी बस यही पता था कि बेस ईयर चेंज हुआ है। मुझे भी सिर्फ इतना पता था कि बेस ईयर चेंज हुआ है, क्योंकि बेस ईयर रट रखा था कि 2011 हो गया, उससे पहले कुछ और था बेस ईयर। बस एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज पढ़ रखा था, तो भी नहीं पता था कि यहां पे लॉजिक है उसका। ठीक है, एमसीए की वेबसाइट के बारे में पता था, तो भी नहीं पता था कि यहां पे लॉजिक है उसका। सर्वे सैंपल और उसका एस्टिमेशन वो भी पता था क्या होता है, वो भी नहीं पता था। प्रोडक्शन मेथड और जीवीए में फर्क भी पता था, तो भी नहीं लिखा। कैसे आएंगे नंबर? क्योंकि जहां से पढ़ा था वहां पर सिर्फ मैं रट रहा था इकोनॉमी। इसीलिए आई नो वी गो स्लो, हम धीरे पढ़ते हैं। दिस इज टेकिंग अ लॉट मोर टाइम देन आई एक्सपेक्टेड ऑल्सो। हम 4-5 क्लास पीछे हैं मेरे हिसाब से, बट द एटलीस्ट 3 क्लास पीछे हैं मेरे हिसाब से। बट द पॉइंट इज के दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये चीजें आती हूं। और ये पता है कहां, वेयर हैव आई नाउ ड्रॉन दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम? 2015 1450 का जो इकोनॉमिक सर्वे है, उसमें ये सारी बात लिखी हुई है। मैं दिखाता हूं आपको। यू कैन गो इफ यू वांट, द क्लास इज ओवर। आप जा सकते हैं। आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू समथिंग। ऐसा नहीं है कि खुद नहीं पढ़ी जा सकती है चीजें। अरे कम ऑन, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स का थोड़ा सा खराब होता है एसईओ। ये देखो, हाँ यही है। ये देखो, MCA 21 यूज करेंगे, सेबी पीएफआरडीए का डेटा लेंगे, इंप्रूव्ड कवरेज होगी, जीवीए मेथड यूज करेंगे, बेस ईयर रिवीजन करेंगे। ये क्वेश्चन था। ये 2014-15 का इकोनॉमिक सर्वे है। क्वेश्चन कब आया है? 21 में। ये सुबह से यही पढ़ रहा हूं मैं आज। यही सेम क्वेश्चन। तो इसीलिए टाइम लगता है, बिकॉज इट टेक्स टाइम।
अब Pragya is asking why this question was asked in 2021. There was no apparent reason why it was asked in 2020. अब जो करंट अफेयर्स के एक्सपर्ट्स हैं वो बता देंगे कि हाँ इसीलिए पूछा था 2021 में, ये हुआ था वो हुआ था. It was not supposed to be asked in 2021. बहुत पुरानी न्यूज थी. बट जनरली अगर उन्होंने जीडीपी सिलेबस में लिखा हुआ है तो आपको जीडीपी मेजरमेंट पता होना चाहिए. बात खत्म. ठीक है, तो लगा बढ़िया आज का जादू. लाइक द जादू ऑफ टुडे. यार जो चीज सिलेबस में है, जो स्टैटिक कंसेप्ट है, वो वैसे भी आना चाहिए. किसी भी साल पूछ लें. ये रिविजन्स जो होती हैं ये कल पढ़ाऊंगा ये. देयर इज अ थिंग कॉल्ड सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स. दिस हैज बीन मेड बाय यूएन एंड आईएमएफ. द लास्ट एसएनए केम इन 2008. नेक्स्ट एसएनए इज गोइंग टू कम इन 2025. तो हो सकता है दोबारा आ जाए क्वेश्चन. कल पढ़ाऊंगा ये. ठीक है, चलो हैव अ गुड इवनिंग. सी यू. मिलते हैं. चलो सी यू. हैव अ गुड इवनिंग. कल मिलते हैं. बाय बाय.